So now we are going to start the program. Good morning and good morning and warm welcome to one day national webinar on awareness and training on intellectual property rights organized by Department of Chemistry Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur in association with Patent Office Baudik Sampada Bhavan Ministry of Commerce and Industry Government of India New Delhi. On behalf of Department of Chemistry, Organizing Committee, and my own behalf, I cordially welcome you all in the inaugural ceremony of awareness and training on intellectual property rights. On this occasion, we are blessed by the gracious presence of most respected Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Alok Kumar Chakrawal Sir, the chief guest of this inaugural program and chief patron of this program. We thank you from bottom of heart for your kind presence in spite of your tight schedule. We also welcome very dedicated registrars of Professor Shailendra Kumar sir for your gracious presence. We also welcome Dean School of Physical Science, Professor P.K. Vajpayee sir, HOD Department of Chemistry, Professor G.K. Patra sir, all deans of various school, heads of various department, and faculty member, research scholar. I also cordially welcome our eminent speaker, Mohammad Atikullah, Assistant Controller of Patents and Design, Patent Office, New Delhi, Dr. Seema, Scientist, Innovation Protection Unit, CSIR, New Delhi, and Dr. Amit Dubey, sir, Scientist, CCOS, Raipur. On this auspicious occasion and as a part of our tradition, now it is time for lighting up lamp and worship to Goddess Ma Saraswati. And to do this, I request all the dignitaries to lighting up lamp and offer flowers to Ma Saraswati. Sir, please.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, Torong Band, for your nice Saraswati Vandana. Now it is time to welcome our guest by sampling. Very beginning, I welcome our chief guest of this function and chief patron of this webinar, Professor Alok Kumar Chakrawal sir. By sampling, I request Professor P.K. Bajpayee sir, Dean School of Physical Science, to do this honor. Sir, please. Bharat. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Professor G.K. Patra sir to welcome Professor Shailendra Kumar sir, Registrar, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Sir, please. Thank you very much, sir. Now, I request Dr. S.K. Singh sir, Associate Professor, Department of Chemistry, to welcome Dean School of Physical Science, Professor P.K. Bajpayee sir, by sampling. Thank you so much. Now it is time to welcome Professor G.K. Patra sir, HOD Department of Chemistry, and to do this, I request Dr. Ashish Kumar Singh, Associate Professor, Department of Chemistry, please. Moving ahead to the program, now it is time for the welcome address, and to do this, I request the convener of this program and head of the head Department of Chemistry, Professor G.K. Patra sir, who is very dedicated, hardworking for department, and I welcome him for his welcome address, sir, please. Very good morning to one and all present in this hall and online platform. Chief guest of today's program, most respected Honorable Vice Chancellor of Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Professor Alok Kumar Chakrawal sir, eminent speaker Mohammad Atikullah, Dr. Shima and Dr. Amit Dube, Registrar Professor Shailendra Kumar, Dean School of Physical Science Professor P.K. Bajpayee, Deans of various schools, heads of the departments, dear colleagues, and my dear students and participants. I am extremely honored to welcome eminent scholars, distinguished speakers, and dear participants in the national webinar on awareness and training on intellectual property rights, jointly organized by Department of Chemistry, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, and Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. At first, I extend warm welcome to our visionary, inspiring leader, Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Chakrawal sir. His idea on student centricity and rational sheer hard work have assured on numerous development of our university, even only in 6 months. We are determined to put your thoughts into action, sir. It's my proud privilege to welcome Mr. Atikullah, Assistant Controller of Patents and Design, Patent Office, New Delhi, who is a brand ambassador of Government of India's program, National Intellectual Property Awareness Mission. He has worked a lot in spreading the IPR awareness in the academic institutes throughout the country. I cordially welcome Dr. Shima of Innovation Protection Unit, CSIR, New Delhi, who has a vast experience on the examination of patent applications. She will enlighten us with the details of granting of patents, patent structure, and filing procedures. I am extremely happy to welcome Dr. Amit Dube of Seacoast, Raipur, who is looking after the units of Central Laboratory Facility and Intellectual Property Right. He will be talking about the role of Chhattisgarh Council of Science and Technology, Department of Science and Technology, Government of Chhattisgarh, and intellectual property right addressal and ecosystem development in Chhattisgarh state. I especially welcome to our beloved Registrar, Professor Shailendra Kumar sir, who is always helping us in all aspects and our source of inspiration. I accord a genial welcome to our mentor, Dean School of Physical Science, Professor P.K. Bajpayee sir. I sincerely welcome all the deans of various schools, heads of the departments, faculty members, and all the participants present in this program. Department of Chemistry started its journey on 2009
It offers UG, PG, and PhD programs on different frontiers areas of chemical science. The department is known for its quality teaching, committed faculty members, and nationally competitive research atmosphere. All the 15 highly qualified faculty members of the department are working hard for overall blooming of the student and expand the knowledge of chemical science. People usually are more concerned about their physical assets like house, building, land, motor vehicles, which they call their property. But what is quite often ignored is intangible assets that come from the mental activity. This is called intellectual property. Intellectual property is the ramification of jurisprudential understanding of real property. The government of India grants us right to protect innovative intellectual work. If we take a look on Indian scenario way back 2015 and 16, there were in all 6,300 patents granted and trademarks were about 65,000. Due to government's initiative for the promotion of awareness about intellectual property in 2021, the number of patents granted has been raised to 4 times, that is 28,391. Trademarks reached up to 2.5 lakhs. However, still the potential for the innovativeness in the India has not been fully explored. The importance of intellectual property protection has not been percolated to most of the young brains of this country, although they have their potentiality to convert their innovativeness into intellectual property. That could have due to the several reasons. Some reasons could be the lack of information about what is intellectual property, why it should be protected, how can we protect it, what are the commercial gains that can be obtained by protecting it. In order to get thorough information, today we have all the three eminent speakers with us. The National Assessment and Accreditation Council, NAC, evaluates the quality enhancement initiative of the education institutes in India. One of the key points that traced by NAC is awareness of the intellectual property rights. Keeping this in mind, we thought that this is the appropriate time to organize this program while we celebrate the platinum jubilee year of India's independence, Azadi Ki Amrit Mahotsav. We should not generate new knowledge just for the sake of knowledge, but we should be able to derive some commercial benefits out of it so that our country will prosper. The development of a country is measured by the number of patents granted to the inventors. Earlier in research mantra was publish or perish. If we do not have good research publication, we do not have good future. But after the initiatives of Dr. Raghunath Masilkar in the patent regime, we have now a new mantra, and that is patent and survive. I hope that this webinar will help the faculty members, researchers, and students to understand the IPR regulations and the patent filing process. With these words, I once again thank you all for gracing the occasion. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir, for your very cordial welcome address and enlightening the participant for the purpose, objectives, and importance of the program on the intellectual property rights. Now, I request very senior professor, Dean School of Physical Science, very dedicated and very supportive, Professor P.K. Bajpayee, sir, to address the August gathering. Sir, please. बौद्धिक संपदा संरक्षण के ऊपर जागरूकता एवं प्रशिक्षण के इस राष्ट्रीय वेबिनार में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, इस संजाल माध्यम एवं भौतिक रूप से ब्लेंडेड मोड में इस राष्ट्रीय वेबिनार के तीनों प्रमुख वक्ता आदरणीय अताउल्ला जी, असिस्टेंट कंट्रोलर पेटेंट एंड डिजाइन, पेटेंट ऑफिस न्यू दिल्ली, हमारे अनुज श्री अमित दुबे जी, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार IPR के अवेयरनेस के लिए काम करते हैं और सीकॉस्ट की तरफ से सभी संस्थानों को पेटेंट फाइलिंग के लिए लगातार मदद करते रहे हैं। माननीय सीमा जी, कार्यक्रम में शामिल विश्वविद्यालय के बहुत ही डायनेमिक, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक रजिस्ट्रार
प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी, इस कार्यक्रम के कन्वीनर आदरणीय प्रोफेसर जी के पात्रा जी, रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त पूरे विभाग के प्रेरणा के जो स्रोत बने हुए हैं और लगातार रसायन शास्त्र विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने, चाहे वो फिस्ट का कार्यक्रम हो या किसी भी तरह के अन्य डिपार्टमेंटल ग्रांट्स को लाने का कार्य लगातार इस विभाग के सृजन के बाद से आप लगातार करते रहे हैं। और आज का कार्यक्रम भी मुझे विश्वास है कि आप सबने मिलके बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद जिस तरह से नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू एडिशन में करने का एक टारगेट हम सबको मिला है, उसमें आईपीआर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। और आईपीआर को समझना और किस तरह से उसको आइडिएशन, इंक्यूबेशन, इनोवेशन के साथ साइनर्जाइज करना, ये बहुत बड़ा काम है। आज के जो हमारे बहुत ही सम्मानीय वक्ता हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि अभी तक जो पेटेंट रिजीम रहा है वो प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। इट वाज essentially to protect the product process or to some extent the innovative processes. So the process regime and product regime has been the center of patent regime in IPR in India. In the new transformation, in the new ecosystem of academics, there is a difference. Now, knowledge conversion into value addition does not have the same processes that we used to have in the management or industrial management. And therefore, one has to understand, especially the young innovators, how they can be incorporated with the IPR regime. This is a challenge with the patenters also and with the patent. Another point that I would like to, I got this opportunity, that the steps in patent filing, starting from filing the application for patent, publication of the patent, granting of patent, and commercialization. Now these two steps are automatic, but the third and fourth step especially, it requires the active involvement of industry, because you cannot commercialize in general the patents which are granted until and unless there is a protocol and innovation of a complete product cycle, or what is known as the design innovation. And this design innovation concept has not really percolated on the Indian universities campuses. So this is also the responsibility of patent regime, how to connect these two slightly divergent things, the knowledge of IPR patent granting process and taking the patent granted into the commercialization state, including the design innovation concept through industry. This is one of the major challenges. Then only, as Professor Patra was saying, the number of patents filed even in India is just a very meager number if you compare China, not even 2 to 3% of what China used to file every year. And therefore, we have to learn dissemination of knowledge and transformation of knowledge has the equal importance in the new regime. This is the mantra that we have to diffuse right down to the stakeholders. And fortunately, in our university, we have got a vice chancellor who himself understands these processes very well, and rather the leader in the field of industry, commerce, and various regimes related with the industrialization. And therefore, we are lucky enough that this process will not only be easier for us, but it will be speeded up with its mentorship and guidance. I think I will not take much time, and thanks the organizers for providing me this opportunity to say a few words. Thank you very much. Thank you, sir, for your address and enlightening the theme of the program and how it is correlated with the national education policy, how much it is important.
Thank you, sir. Now it is time to request very dedicated, very hardworking, and to believe just unbelievable, all time available for any program. Our registrar sir, Professor Soilendra Kumar sir. Sir, please address the gathering and bless us. Thank you, Dr. Subhas Banerjee ji. Most honorable and respected Vice Chancellor sir and chief guest of the today's one-day national webinar awareness of and training on intellectual property rights, Professor Alok Kumar Chakraval ji, Dean of School of Physical Sciences, Professor P.K. Vajpayee ji, our esteemed speaker today, Shri Muhammad Atikullah, Assistant Controller Patent and Design, Patent Office, New Delhi, Madam Dr. Seema ji, Dr. Amit Dubey ji, our Head of Department of Chemistry Department, Professor G.K. Patra ji, our senior colleagues sitting here, Professor T.V. Arjunan ji, Professor L.V.S. Bhaskar ji, all our faculty members, especially faculty members of Department of Chemistry who are sitting in front of us, all the participants and dearest students from Tarang Band. So it's a great opportunity for all of us, as Professor G.K. Patra has already mentioned, and then explained by Professor P.K. Vajpayee ji. So, and our Honorable Vice Chancellor sir will also enlighten us. And thereafter, our three most eminent speakers will be delivering lectures on the today's program. I would like to congratulate Department of Chemistry, who has emerged like a very important department of this university, coming up with flying colors with many good research publications, providing the students a very best platform for the research and their study, and conducting such a nice program which is relevant for our national education policy, and to fulfill the dream of the Honorable Vice Chancellor sir, as Professor G.K. Patra has already mentioned. Really they need to be congratulated. And secondly, I would like to mention once again about our Honorable Vice Chancellor sir, whose visions are very loud and clear before everybody. And from first day, I think he had made a plan to develop this university before joining this university. And every moment he is doing best, guiding us, mentoring us, providing the best facility, and to fulfill the vision of his own, and communicating us to execute the things to make this university self-sustainable in terms of academics and financially. His many visions are there, like to have a very good accreditation in NAC, NIRF ranking, and implementation of national education policy that is under process. Uh, Ultimately, his thought is to provide the best place in this university to the students to acquire their knowledge, having a conducive environment for their research work, to have skill development facilities, and to have entrepreneurship also. So really, we are fortunate to have such kind of dynamic personality in our campus, and for that, we should be grateful to our Honorable Vice Chancellor, sir. Once again, I would like to acknowledge our eminent speakers, external speakers, Dr. Sri Muhammad Atikullah ji, Dr. Seema Madam ji, and Amit Dubey ji. All other participants, definitely they will be having very good session and deliberations, interactions on today national webinar. And once again, I wish that this webinar will be having a great place for deliberations, and I wish great success for all of you. I extend my thanks to the organizer to they have provided me the opportunity to speak for you. Thank you all. Thank you. Thank you very much, sir. And for enlightening the and guiding
always your guidance and support, we are able to organize any program, sir. And we got 100% support from you. This is the platform I must share that when we organized Science Day, it was first time for us, but because of your constant support, anytime you just ready to help, and thank you so much for your support, sir. Thank you. Now it is time to welcome and request eminent scholar and assistant controller of patents and design from Patent Office New Delhi, Mr. Mohammad Atikullah sir, to address the gathering and say few words about the patent programming and awareness program. Sir, please. Sir has joined online, so I request to please start your view. Thank you, sir. मेरी आवाज आ रही है सर आपको? Yes, sir. Yes, sir. Please. थैंक यू वेरी मच सर. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले मैं वाइस चांसलर सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने यूनिवर्सिटी में हमें इस प्रोग्राम को आयोजित करने का मौका दिया. रजिस्ट्रार सर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारत सरकार की तरफ से. जैसा कि आपको पता है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार बहुत सारे कार्यक्रम रन कर रही है. उसमें एक प्रोग्राम ये भी रन हो रहा है, निपैम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन. इस मिशन के तहत हम लोग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर आउटरीच करके IPR के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाउ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटीज और स्कूल, इवन स्कूल और कॉलेज लेवल्स. तो इसके तहत ये प्रोग्राम का, इस वेबिनार का आयोजन किया गया. और दूसरी बात यह है कि जब हम एक्चुअली जब देखें तो जब हम बात करते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी की, तो छोटे से बच्चे हो उन सबको पता है कि जब हम बड़े होते हैं तो कैसे हम टेंजिबल प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं, पैसा अर्न करेंगे, उसके बाद हम लैंड परचेस करेंगे या हाउस बनाएंगे. लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो कैसे अर्न होती है, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो जब इंसान कोई चीज अपने दिमाग में सोचता है और जो तस्वुर करता है, जो सोचता है और सोचने के बाद जब उसको किसी टेंजिबल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है, तो उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है. और अनफॉर्चुनेटली अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें, जैसे सर ने अभी डिस्कस किया चाइना, जापान और US, तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में इतने अवेयर है कि उनका कंट्रीब्यूशन अगर GDP में देखें तो हमारी कंट्री से कई एक फार गुना बेटर है. और मैं आपको एक डेटा देता हूं कि इस साल इंडिया में 60,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए हैं. आउट ऑफ दैट 60,000 पेटेंट एप्लीकेशन, only 43% patent applications are filed by our Indian applicant. Rest all patent applications are filed by the foreign applicant. और आपको जान के हैरानी होगी कि उन 43% एप्लीकेशंस में से सिर्फ below 10% एप्लीकेशंस are being filed by our research organizations और आप यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस. जबकि आप इवन IITs का डेटा देखें तो मैक्सिमम 6 ओल्ड जितने भी IITs है, सारी IITs 600 और 700 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए हैं, जो कि आप किसी डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत कम है. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस नहीं है. लोग, क्या बात है, क्यों रिसर्च कर रहे हैं. अगर आप NIRF का रैंकिंग का डेटा देखें तो 1,20,000 इस बार रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं और 1,20,000 में उम्मीद कीजिए 5% एप्लीकेशन भी अगर IPR में, अगर पेटेंट में फाइल हुआ होता तो हमारा पोजीशन पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे हम IPR में है. पेटेंट के अंदर में पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन के ऊपर है 60,000 पेटेंट एप्लीकेशन के साथ. और रेस्ट जो अदर कंट्री है उनके डेटा इतना है कि जैसे आप चाइना की बात करें 3 लाख और 4 लाख एप्लीकेशन उनका है पेटेंट फाइलिंग. हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते उनके सामने जैसा सर ने बताया. तो क्या वजह है कि हम रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन वह पेटेंट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, इसमें कहाँ लैकुना है, इसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आज इस वेबिनार का आयोजन किया गया. हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप सबको पता होगा कि 2016 में IPR पॉलिसी लॉन्च की गई. उस IPR पॉलिसी के अंदर IPR सेल क्रिएट करने की बात थी कि हम IPR सेल क्रिएट करेंगे, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में आउटरीच करेंगे और लोगों को बतलाएंगे IPR की इंपॉर्टेंस के बारे में. आपको जान के खुशी होगी कि आफ्टर 2016 135 IPR सेल यूनिवर्सिटी के अंदर खुल चुके हैं और गवर्नमेंट ने बहुत मेजर स्टेप्स लिए हैं. आपको ये भी पता होगा कि 80% फी रिडक्शन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए पेटेंट फाइलिंग के लिए कम कर दिया गया. पिछले 10 और 15 इयर्स में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 700
पेटेंट एग्जामिनर का रिक्रूटमेंट हुआ, जो कि पेटेंटिंग प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। अभी रिसेंटली आप देखें तो एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन का प्रोसीजर लॉन्च किया गया, और इसके तहत इन सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, उसके तहत अगर आप देखें तो इंडिया का जो ग्लोबल आईपी इंडेक्स रैंकिंग था, आप अगर देखें तो 81 के आसपास था, और अभी हम 46 के आसपास 2021 में पहुंच चुके हैं। तो हमें उम्मीद की किरण तो दिखती है। हमारे रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट बहुत ही लेबोरियस है, और कई बारों में हर जगह प्रूफ कर चुके हैं कि हम किसी से कम नहीं है। लेकिन बस ये बात ये है कि जो रिसर्च हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से न रह जाए। हम मेहनत करते हैं, अगर हम आसान लैंग्वेज में ये बात बताएं तो हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, यानी, और उसका जब फल काटने का टाइम होता है, जब हम उससे पैसा अर्न करने की बात होती है, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात होती है, तो हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं। तो अगर हम सारे अपने रिसर्च को अगर हम पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट कर ले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर उसको हम प्रोटेक्ट कर ले, तो हो सकता है कि उससे हमारा भी बेनिफिट होगा और कंट्री का भी बेनिफिट होगा। और इसीलिए आज इस तरह की प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. And I believe that your support will be extended in future also. And I must mention here, this is the person who has taken initiative to organize such program, and he has sent an email to our faculty member. And because of his effort and initiation, we could have just arranged this program today. So thank you very much, sir, once again from all the department and university fraternity. Thank you, sir. Now it is the time for the inaugural address, and everybody is waiting for that. And if that today we are in good time, so we eager to listen our chief guest. This distinguished person, although does not need any introduction, but I took this opportunity to delight, and I am delighted to inform you that such a dynamic, motivational, and spiritual personality I ever seen before. He is a great teacher, excellent administrator with outstanding leadership skills. Under his leadership, Guru Hasidas University is marching ahead not only towards the achieving its new heights of academic activity, as we have seen by organizing different seminar, webinar, and patent related and also national education related programs, but also very recently, the university has taken a initiative towards tumbling the bridge between industry and academia. And I hope this is the first time the university is taken such kind of initiative under his leadership. And the CSR scheme, which was the first time initiated in our university, I guess. I have never even heard about this such kind of activity in this university, and this is the only because of leadership and visionary. I must say. So, lot many more to say. I am not saying, and he is none other than our honorable Vice Chancellor, sir, Professor Kumar Chakrawal, sir. So, with this, may I request, sir, please share your views and bless us with your inaugural speech. Sir, please. Thank you, Subhash ji. लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है, और उनका जो भी शॉर्ट बातें उन्होंने कही वो काफी थॉट प्रोवोकिंग है। और मोहम्मद अतीकुल्लाह जी, हम आपको ये एश्योर करना चाहेंगे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल को बहुत तेजी से इस्टेब्लिश भी करेगा, और हमारे यहाँ से पेटेंट फाइलिंग पेटेंट फाइलिंग में हम आपको ये अश्योर कर सकते हैं कि जल्दी ही हमारा विश्वविद्यालय संभवतः
जिससे मैक्सिमम पेटेंट फाइलिंग होती है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, पाक महीना चल रहा है, तो अतिकुल्ला जी हम आपके सामने कुछ टच नहीं करेंगे, ठीक है? ऑफ कोर्स आपने शहरी में अच्छी चीजें खाई होंगी और इफ्तार में इससे बेहतर चीजें आप एंजॉय करेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है, लीडरशिप एक के बाद एक लोगों में दिखाई दे रही है, और जब से प्रोफेसर पीके वाजपेयी जी फिजिकल साइंस स्कूल के डीन बने हैं, अचानक से फिजिकल साइंस की एक्टिविटीज में एक बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। तो काम अपने आप हो रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। सुभाष बनर्जी जी और हमारे रजिस्ट्रार साहब यूं ही तारीफ करते रहते हैं, ऑफ कोर्स वाजपेयी जी भी कर रहे थे। और जैसा कि बनर्जी जी कह रहे थे कि जब साइंस डे ये सेलिब्रेट कर रहे थे, तब एक भी फाइल इनके यहाँ से रुकती नहीं थी। तो रजिस्ट्रार जो है ना, वो बड़ा क्रूशियल पोजीशन होता है। प्रतिभा जी ऑनलाइन मुस्कुरा रही हैं धीमे धीमे, ठीक है? तो ये एक्चुअली बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ अतिकुल्ला जी। तो शिक्षक क्या है, क्लास में बैठे सभी बच्चों पे ध्यान रखता है। तो ऑनलाइन करीब 56 लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ इस सभाखंड में कुल 48 लोग हैं, यानी कुल मिलाकर के 104 लोग हम लोग ये ब्लेंडेड मोड में एंजॉय कर रहे हैं। गिन लीजिएगा, 48 ही होंगे, एक आध कम भी नहीं होंगे। तो रजिस्ट्रार साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसी वजह से लगातार एक के बाद एक चीजें एग्जीक्यूट फटाफट हो रही हैं। और कंसर्न रहता है है ना, बिना रखे हुए कुछ एक चीजें, जैसे कि डेटा पात्रा साहब बता रहे थे, कुछ 28,000 पेटेंट्स आप बता रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो निर्मला सीतारामन जी ने प्रेजेंट किया था, उसके हिसाब से हमने पिछले साल 2021 में इंडिया में और फॉरेन में, चाहे वो यूएस पेटेंट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पेटेंट हो, ऑस्ट्रेलियन पेटेंट थोड़ा आसानी से मिल जाता है। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री के लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, ऑस्ट्रेलियन पेटेंट थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो काफी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलियन पेटेंट की तरफ जाते रहते हैं। मगर पिछले साल में इंडियंस की तरफ से जो कुल पेटेंट अवार्ड हुए थे इंडियंस को, वो करीब 58,200 समथिंग थे। मैं 58,000 की बात कहूंगा। और ये 2014 के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है पेटेंट्स की साइड में। ऑफिस से इंडियन पेटेंट ऑफिस से लोग बैठे हुए ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि हम पेटेंट में काफी आगे निकल रहे हैं। मगर वो खुशी तुरंत रफू चक्कर हो जाता है जब हम चाइना के पेटेंट के फिगर पे देखते हैं। पिछले साल उसी पीरियड में चाइना ने 5,32,000 पेटेंट्स हासिल किए थे, विद इन चाइना एंड बियॉन्ड द चाइना। सारी दुनिया का अगर स्कोर मिला लें तो 5,32,000 और 58,000, हार्डली 10% ऑफ चाइना। पॉपुलेशन तो लगभग हम उनके आसपास पहुंच गए, मगर पेटेंट्स में हम उनका 10वां भाग ही है। अमेरिका करीब 3.5 लाख पेटेंट पिछले साल उन्होंने हासिल की। उनकी आबादी हमारी 1/4 भी नहीं है।
तो अगर अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो हमारा 1 साल का पेटेंट करीब 14 लाख पेटेंट होने चाहिए, और हमने हासिल कितना किया? 58,000। आप लोगों का कोई दोष नहीं है। हर इकॉनमी एक साइकिल से घूमती है, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है हर चीज का, है ना। चाइना एक समय गर्दिश के दौर से गुजर रहा था 1990 में, जब 90 बड़ा क्रांतिकारी समय रहा है। 90 का दशक अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी रहा है। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया, है ना। यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। ये आज जो यूक्रेन और रशिया का समस्या चल रहा है, वो यूएसएसआर के टूटने के बाद के कारण से ही शायद कहीं न कहीं हो रहा है। अब जो समस्या ये है कि पब्लिकेशन और पेटेंट दोनों अलग-अलग दिशा में जाते हैं। या पब्लिश कर लीजिए या पेटेंट करा लीजिए, दोनों एक साथ नहीं करा सकते। ठीक है ना? अर्जुनन साहब, एम आई राइट? वो हर बात में यस सर कहते हैं, कभी नो सर नहीं कहेंगे। इसीलिए कल मैंने इनसे अंग्रेजी में ही बात की, है ना। हमने कहा अब इनसे हिंदी में बात नहीं करेंगे। वो सुन लेते हैं मगर बोलते नहीं है। मिश्रा जी धीमे-धीमे मुस्कुरा रहे हैं ऑनलाइन। समस्या ये है कि 1995 में बहुत सारी चीजें बदल रही थी। उसके पहले उरुग्वे राउंड, फिर ट्रिप्स आया और ट्रिम्स आया। उसके पहले गैट हुआ करता, GATT, और वो गैट के बाद जब इसको WTA में कन्वर्ट किया गया, WTO में, तब से पेटेंट का थोड़ा सा जोर और भी बढ़ गया। अब अगर चाइना ने 5,32,000 पेटेंट्स किए, तो उसमें आप देखिए कि कमर्शियलाइजेशन कितना हो। कमर्शियलाइजेशन उनका ज्यादा, उनका डायरेक्टली स्टार्टअप से लिंक्स है, उनका डायरेक्टली कहीं ना कहीं व्यवसाय में क्या। अब हम सेमीकंडक्टर के बारे में क्या कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। आज चाहे 110 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट करने की बात कही, आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल प्रोड्यूसर बनने वाले, जिसमें एप्पल भी आ गया, सैमसंग भी आ गया, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी आ गया। मगर हम इनोवेशन क्या कर सकते हैं? जब हम क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे और हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी, तो हमने अपना तरीका निकाला इंडियंस के पास। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे पास, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है और हम हमेशा उसका क्रेडिट भी लेते हैं, मगर आज हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बात। हम उसके आधार पर आज कुछ कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अब नीम से लेकर, हल्दी से लेकर, बासमती से चावल से लेकर दुनिया की सब चीजें जो भारत में बनती थी, उसका पेटेंट तो कोई और ले गया है। जो भारतीय चीजें हैं, मैं हमारे जो जुगाड़ सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उस जुगाड़ के प्रोसेस का या एंड रिजल्ट का ही हम अगर पेटेंट कराना शुरू करें तो हम कमाल कर देंगे। यहां बैठे हुए, सवा घंटे में बैठे हुए 48 के 48 लोग 48 पेटेंट नहीं, 480 पेटेंट नहीं, 4,800 पेटेंट निकाल सकते हैं। तो ये विश्वविद्यालय नंबर 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं कई बार सुनता हूं, लोग कहते हैं सर मुझे 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला, मुझे 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। बहुत अच्छी बात है। उस प्रोजेक्ट की फलश्रुति क्या है? चलिए 5 पेपर पब्लिश कर लिए, ठीक है, वो आपका गेन है। समाज का गेन क्या है? समाज को क्या मिल रहा है? राष्ट्र को क्या मिल रहा है? आप GDP में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये बड़ी चीज है। प्रमोशन होता रहेगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो मैंने पहले दिन कह दिया। यहां बैठे हुए हर लोगों को अपना ड्यू विदाउट फेल मिलेगा, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको बेस्ट वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, इस बात का एश्योरेंस है। अब बेस्ट का मतलब बेस्ट ही होता है। लोग तो गूगल में बैठे हुए नाश्ता करते करते भी गूगल को भी क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। उनको गूगल वाले बहुत कुछ देते हैं, उसके बाद भी कहेंगे नहीं गूगल में यार ये नहीं है। जो मजा अपने यहाँ पे चाट पकौड़ी खाने का था, गूगल में नहीं है। गूगल वाले को ऐसी चाट पकौड़ी लानी चाहिए। अब गूगल वाला कहेगा चलो भाई चाट पकौड़ी लाते हैं। हम देखिए, इंसान की ऐक्षणाओं का, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अब मजेदार बात बताऊं, अच्छा, मैं मेरी किसी भी बात का कोई अन्यथा अर्थ मत निकालिएगा, ठीक है। एक कंपनी थी जिसने एक प्रोडक्ट खरीदा, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो प्रोडक्ट खरीद सके।
प्रोडक्ट खरीदा, उसको अलग किया, उसके पुर्जे पार्ट्स वगैरह देखे, फिर उसकी नकल बना के बेचना शुरू कर दिया। और आज भी ऐसा कर रहे हैं। और आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। अभी शायद 2 साल पहले $5 बिलियन उन्होंने एप्पल को पे किया। सैमसंग की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं हम D&D करते हैं, वो R&D नहीं करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, वो क्या करते हैं, D&D करते हैं। एप्पल वाले सर पीटते रह जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप सर पीटिए, इंटरनेशनल कोर्ट में हम लड़ लेंगे और आपको पैसा चाहिए तो हम दे देंगे। $5 बिलियन दिया, उसके सामने $25 बिलियन कमा लिया। ठीक है, ले जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दिया। हम ये नहीं करें कि आप लॉस ब्रेक करें। आज आपको हवाई जहाज बनाना है तो राइट ब्रदर्स, विल्बर एंड जेम्स ब्रदर्स जो भी थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, विल्बर और क्या था, जॉन एंड विल्बर, तो आप वहां से कोई थोड़ी हवाई जहाज बनाना शुरू करेंगे। आज तो सीधा बोइंग की टेक्नोलॉजी को आप पकड़ेंगे ना, उसके आगे आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट की बात है, एक अंदर की भावना की बात। हमको कहीं ना कहीं से ये समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसका अल्टीमेट फायदा क्या है। सरकार हमें इतनी सैलरी दे रही है, हम इस बात को बार बार ये कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि हमें रोटी कपड़ा और मकान तो इंश्योर हो गया है। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, आप उनका परचेजिंग पीपीपी जिसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी जो बोलते हैं, वो देख लीजिए और हमारी परचेजिंग पावर देख लीजिए, और उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छा एमोलमेंट्स मिल रहा है आपको। अतिकुल्ला साहब, अगर आप सहमत हो तो बताइएगा मेरी बात से। ठीक है, आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ ऐसी समस्या नहीं है। मैं जब एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में साथ में था, तो वहां पर कई सारे प्रोफेसर ने जब हमारी सैलरी सुनी और अपनी सैलरी को उन्होंने परचेजिंग पावर के लेवल पे कंपेयर किया, तो उन्होंने कहा यार आप लोग तो बड़े अच्छे वातावरण में, आप लोगों को काफी सारी चीजें मिल रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि केवल सैलरी से नहीं, एक प्रोफेसर, सच्चा प्रोफेसर वही है जो ज्ञान को कमर्शियलाइज कर सके और जो ज्ञान को इंडस्ट्री के उपयोग के लिए ला सके, जो ज्ञान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ला सके, जो ज्ञान को राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग कर सके। केवल सिलेबस पूरा कर देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है टीचिंग, हमारा काम है रिसर्च, हमारा काम है एक्सटेंशन, और उस एक्सटेंशन में इंडस्ट्री भी आ जाता है, उस एक्सटेंशन में हमारा समाज भी आ जाता है, उसी एक्सटेंशन में राष्ट्र का उद्धार भी आ जाता है। तो हमने जब इंडियन पेटेंट ऑफिस को, अगर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को हमने ये कह दिया कि हम इस विश्वविद्यालय को नंबर 1 पेटेंट अर्निंग, नॉट अवॉर्डिंग, नॉट फाइलिंग, नंबर 1 पेटेंट यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को, और उसके लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है, एक विद्यार्थी भी कर सकता है। एनीवन कैन फाइल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आप यहाँ बैठे हुए सारे लोग कर सकते हैं, और आप इस बात को ध्यान में रख के करें कि भाई उसका कमर्शियलाइजेशन कैसे हो, उसके प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन है। इन चीजों का अगर हम ध्यान में रख के करें, मुझे नहीं लगता है कि जो अभी मिनिस्ट्री का मिशन चल रहा है पेटेंट अवेयरनेस का, उसमें हम लोग अवश्य निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं अगर हम चाहे तो। इस विश्वविद्यालय को सही मायने में अगर वैश्विक पटल पे आना है, अगर इसको राष्ट्रीय पटल पे नंबर 1 बनना है, तो पेटेंट के मामले में हमें नंबर 1 बनना पड़ेगा, और नंबर 1 केवल भारत में नहीं, शायद दुनिया में बनना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं, रुपया, अर्निंग, इनकम, आत्मनिर्भरता, वो आपके सशक्त होने का एक बड़ा मानदंड है, एक बड़ा मापदंड है। आप जिस दिन स्वावलंबी हो गए, उस दिन आप दुनिया के राजा हैं। जिस दिन आप स्वावलंबी हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए, जिस दिन आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आप दुनिया के किंग है, आप किसी भी समस्या को पार पा लेंगे, उस दिन आपकी विजय होगी। तो इस तरह के नेशनल वेबिनार, या जो ब्लेंडेड मोड में चल रहा है, सेमिनार प्लस वेबिनार, इसका कोई नया नाम दे सकते हो तो आप लोग दे दीजिएगा, मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस का बड़ा पार्ट है। और केवल अवेयरनेस तक बात नहीं कि हम जानते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग पेटेंट फाइल करें। 2 पेपर कम पब्लिश होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी एपीआई की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा एपीआई आपको मिल जाएगा, प्रमोशन की कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, मगर पेटेंट फाइल होना चाहिए। नाउ
ऑनवर्ड्स आज की तारीख से मैं देख पा रहा हूँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग के लोग हैं, फार्मेसी के लोग हैं, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इस विश्वविद्यालय को वास्तव में एक अलग तरह का विश्वविद्यालय बना सकते हैं। आईपीआर के मामले में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। अभी मैं आपको बताऊं, बड़ा फर्क किस बात से पड़ता है? एनवायरमेंट से पड़ता है। एनवायरमेंट मुझे लगता है कि अब कंड्यूसिव हो रहा है या होता जा रहा है। मैं अध्यापक का नाम नहीं लूंगा। एक अध्यापक एक दिन आए मेरे पास, आप ही के मित्र हैं, और धीमे से उन्होंने निकाल के मुझे 3 पेटेंट दिया। मैंने कहा क्या सर, ये मेरे 3 पेटेंट पब्लिश हो गए हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मुझसे कहने लगे सर पहले लोग इसको दिखाने में डरते थे। मैंने कहा क्यों? कि पता नहीं सर, कोई किसी को बताता नहीं था। इंजीनियरिंग में मैं गया था, अर्जुनन जी, मुझे फैकल्टी का नाम नहीं याद है, शायद है एक लेडी थी कोई, नहीं एक लेडी कोई थी, उन्होंने कुछ बताया, उनके साथ शायद कुछ 20-22 पेटेंट्स हैं मुझे लगता है, नाम तो मैं उनका भूल गया मगर मिला था आपके। तो कहने का मतलब ये है अतिकुल्ला साहब, हमारी यूनिवर्सिटी में अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि 50 से कम पेटेंट्स नहीं होंगे विश्वविद्यालय की दृष्टि से। आप तो सर्च कर लेंगे, तुरंत मिल जाएगा। तो हम इस मामले में आपका सहयोग कर रहे हैं। हमारा आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारा सहयोग करें और इस विश्वविद्यालय को पेटेंट के क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हम अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकें और हम आपका सहयोग पा सके और आपका सहयोग कर सके, ऐसा कुछ करें। और मैं निवेदन करूंगा मेरे पात्रा जी को और रजिस्ट्रार साहब और वाजपेयी जी को कि अतिकुल्ला जी को यहाँ बुलाइए कैंपस पे और वो यहाँ आकर के देखें। हम वर्चुअल मोड में जितना सीखते हैं उससे ज्यादा हमें फिजिकल मोड में सीखने का मौका मिलता है, और मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक अच्छा दिन होगा। कोई एक इवेंट जरूर से ऑर्गेनाइज करिए। And once again, I wish you all a wonderful day ahead, and you'll be learning a lot many things. Procedurals, बहुत सारी चीजें क्या प्रोसीजर पता नहीं होता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं, मगर अब चूंकि मिनिस्ट्री खुद हमें सपोर्ट कर रही है तो मुझे लगता है कि हम इस मामले में बहुत अच्छा कर पाएंगे। Once again, all the best. Thank you very much. Thank you so much for blessing us, and your words and motivation will be with us, and we'll definitely work on this direction. And with publication, we'll again assuring you that School of Physical Science will try to file patents of different research work. And now it's time to formal vote of thanks. For that, I request Dr. Santosh Singh Thakur, sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, and Secretaries of this webinar to please convey formal vote of thanks. Sir, please. Thank you very much, Dr. Banerjee, sir. I feel very privileged, sir, to have the opportunity to propose vote of thanks for today's national webinar on awareness and training intellectual property right. At the outset, we would like to express our sincere thanks and deep gratitude to our chief guest and chief patron, versatile personality, Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Alok Kumar Chakrawal, sir. Sir, your constant motivation, hard work, and potential leadership is creating a milestone for the holistic 360-degree development of our university, sir. Thank you very much. We are extremely thankful to keynote speaker, Mr. Muhammad Atikullah, Assistant Controller, Patent and Design, Patent Office, New Delhi, for taking initiative for the organizing the webinar jointly for such a worldwide, magnificent, useful, and productive topic. Thank you very much, sir. We are very much thankful to Registrar, sir, Professor Salen Kumar, sir, who always provides spontaneous and quick administrative help, suggestion, and encouragement. Thank you, sir. We express our sincere gratitude and thanks to Professor P.K. Bajpai, sir, Dean of School Physical Sciences, for his presence and valuable guidance and guiding us time to time, sir. And we are very much thankful to the convener and head of the department, Professor G.K. Patra, sir, for his untiring efforts in making a grand success of this webinar. We express our gratitude to Dr. Seema, Scientist CSI New Delhi, Dr. Amit Dubey, sir,
scientist, Chhattisgarh Council of Science and Technology, Raipur, to be a part of this webinar as eminent speakers. Sincere thanks to all respected faculty members of the Department of Chemistry, as well as thanks to research scholars, PG students, non-teaching staff for their help. On the behalf of organizing team, we express our sincere thanks to all deans, HODs, and faculty members, administrative staff members, and sincere thanks to Media Cell, Professor PJ Misra Madam. We are also thankful to all participants of this webinar who have joined us virtually throughout the country. Last but not least, we pray our express sincere gratitude to Goddess Ma Saraswati and Baba Guru Ghasidas for providing us knowledge and wisdom. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir, for your formal vote of thanks. And I would like to take this opportunity to again give a big hand for Vice Chancellor sir and Registrar sir, please. Now we'll take a short 10 minutes high tea. Mr. Mohammad Atikullah sir, Assistant Controller of Patent and Design, from Patent Office, New Delhi. So please thank you. Huh?
इसको अपने कॉलेज की रैंकिंग या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए देखिए इन्होंने एक बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर लगाए, IPR एंड पेटेंट्स। तुम कैसे एनालाइज कर जब उस आइडिया को टैंजिबल प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे एक रिएक्शन लगानी है, एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो मॉलिक्यूल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि एक मॉलिक्यूल बनाना है और ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा।
इंडिया, अगर आप इंडिया में पेटेंट लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके आविष्कार के लिए आपको पेटेंट देती है। ये एक मोनोपोली राइट है, ये एक्सक्लूसिव राइट है। इसका मतलब अगर आपका पेटेंट है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा किसी और आदमी को अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है उसको टच करने का। Now, this right is given by the government of India. जिस पर्सन को पेटेंट मिलता है उस पर्सन का नाम पेटेंटी होता है, और जिस चीज के लिए पेटेंट मिलता है उस चीज को, उस प्रोडक्ट को पेटेंट से प्रोडक्ट करते हैं, ये आपको 20 इयर्स तक के लिए दिया जाता है। पेटेंट एक मोनोपोली राइट है जो आपको 20 इयर्स तक दिया जाता है। किस दिन से? जिस दिन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस दिन से लेकर के आपको 20 इयर्स तक का आपका राइट होगा। इसका क्या कर सकते हैं हम? कमर्शियल गेन कर सकते हैं, इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। नाउ पेटेंट क्यों दिया जाता है? जो आप डिस्क्लोज करते हैं अपना फुल इन्वेंशन गवर्नमेंट के पास डिस्क्लोज करते हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट आपको मोनोपोली राइट देता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इससे गवर्नमेंट का क्या फायदा है और आपका क्या फायदा है? आपका ये फायदा है कि अगर आप अपने इन्वेंशन को पेटेंट नहीं कराएंगे, अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में कोई आदमी अगर उसका इन्फ्रिंज करेगा तो यू हैव नो लीगल बेसिस टू स्टॉप देम। गवर्नमेंट को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को ये फायदा है कि टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट क्या रजिस्टर हो जाएगी तो गवर्नमेंट के नॉलेज में आ जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज करने में, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हम आपको जॉब सर्व करने में कर सकते हैं। तो पेटेंट गिव एंड टेक टेक्नोलॉजी होती है। पेटेंट जो है आप कुछ देते हैं, बदले में सरकार आपको कुछ देती है। आप सरकार को इन्वेंशन डिस्क्लोज करते हैं, बदले में सरकार आपको मोनोपोली राइट देती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आए कि क्यों पेटेंट जो है मोनोपोली राइट जैसी चीज किसी को दी जाती है। इसकी बहुत सारी फिलॉसफी हो सकती है, इसमें बहुत सारे डिबेट हो सकता है, लेकिन जो सबसे आसान फिलॉसफी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी टॉप किया करता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। क्यों? कभी आपने सोचा? उसका दो मकसद होता है। एक मकसद तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और दूसरा मकसद हिडन होता है। एक मकसद क्या है कि जो बच्चे ने मेहनत किया, लगन से पढ़ाई की है, उसके लिए उसको अवार्ड और रिवार्ड मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि जो आने वाले जनरेशन है उससे मोटिवेशन मिले और वो लोग अपनी मेहनत से पढ़ाई करें। ठीक उसी तरह से अगर कोई साइंटिस्ट अच्छा इन्वेंशन करता है तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए पेटेंट जैसी मोनोपोली राइट दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि आने वाले साइंटिस्ट में, वहाँ जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं उनके अंदर भी एक कॉम्पिटिटिवनेस तैयार की जाए, उनके अंदर भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि अगर हम भी अच्छा रिसर्च करेंगे और हमारा भी इन्वेंशन पेटेंट के लायक है तो मुझे भी इस तरह की मोनोपोली राइट अवार्ड होगी। ना एक यहाँ पे बात समझ लेनी है कि पेटेंट जो होता है टेरिटोरियल राइट होता है, देयर इज नो इंटरनेशनल पेटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने पेटेंट इंडिया में कराया है तो ये पेटेंट जो है इंडिया के जुडिक्शन में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक वैलिड है। अगर आप चाहें कि यूएस जाकर कहें कि देखो मैंने पेटेंट इंडिया में लिया है और हमारा आपकी कंट्री में भी राइट है तो हम यहाँ भी अपना जो मर्जी वो करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि सिंपल फिलॉसफी ये है कि राइट अधिकार कब दिया जाता है? जब हमारे पास अधिकार हो। जब मेरे पास एक बंगला है वही मैं आपके नाम कर सकता हूँ, 4 बंगला तो आपके नाम नहीं कर सकता। तो जो पेटेंट होता है इसमें अधिकार देने की बात होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार इंडिया के अंदर है और इसलिए इंडिया के जुडिक्शन में आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने इन्वेंशन को कमर्शलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो फिर वहां उस कंट्री के लॉ के हिसाब से आपको अपने इन्वेंशन का पेटेंट लेना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि हमारा एग्रीमेंट है अदर कंट्री के साथ कि अगर हम आपको पेटेंट देते हैं, आपके सिटीजन को पेटेंट देते हैं, हमारे सिटीजन को भी आप पेटेंट देना। तो एक आम इंसान अगर इंडिया का चाहे एक इन्वेंटर तो यूएस के अंदर जाकर के, चाइना के अंदर जाकर के, जापान के अंदर जाकर के पेटेंट ले सकता है। लेकिन आपको खुद जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पता होगा कि हमारा ये इन्वेंशन है, कहाँ कहाँ हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया में पेटेंट लेने से इंडिया के जुडिक्शन में वैलिड है और बाहर वैलिड नहीं होगा। देयर इज नो इंटरनेशनल पेटेंट। एक टेरिटोरियल है, जिस कंट्री में लेंगे उसी कंट्री में जो है आपको एप्लीकेबल है। नाउ इन्वेंशंस, जो पेटेंट होता है जैसा मैंने आपको बताया इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि इन्वेंशन क्या होता है। इन्वेंशन को पेटेंट एक्ट 1970 में डिफाइन किया गया है। और कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए, इन्वेंशन हम उसी को कह सकते हैं जो एपरेटस, डिवाइस या प्रोसेस या मेथड कोई हो। जैसे आपने कोई मॉलिक्यूल बनाया तो उस मॉलिक्यूल के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि वह नोबल होना चाहिए, नॉट ओनली इंडिया, पूरे ग्लोबली वो नोबल होना चाहिए। मतलब जो काम आपने बनाया है, जो आपने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज की है या जो आपने मशीन बनाया है, जो आप प्रोसेस लेके आ रहे हैं वो नया है।
अब यहाँ पे साइंटिस्टों को अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे जाने कि ये नया है कि नहीं है। तो देखिए, जब आप रिएक्शन लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रायर आर्ट सर्च करते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट दो तरह के हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक बोलते हैं NPL, नॉन पेटेंट लिटरेचर, और एक को बोलते हैं PL। तो जनरली जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम देखते हैं, जो सर्च करते हैं, वो नॉन पेटेंट लिटरेचर पे सर्च करते हैं। आई एडवाइज टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बहुत बड़ा डेटाबेस छोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेटेंट लिटरेचर। आज से कोशिश कीजिए, हैबिट डालिए कि हम जब रिसर्च करेंगे, हम जब रिएक्शन लगाएंगे, तो इसको भी देखेंगे, थोड़ा सा इसको नजर में रखेंगे। तो पेटेंट लिटरेचर गूगल पेटेंट से आप देख सकते हैं, ये स्पेस नेट से देख सकते हैं, वाइपो है, वहां पे फ्री डेटाबेस अवेलेबल है, हमारे इंडियन साइट भी है, हमारे पेटेंट ऑफिस के ऊपर भी पेटेंट सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं पेटेंट लिटरेचर के अंदर। तो आपने जो कुछ R&D किया है, उसमें आपको लगा कि हमने जो काम किया है, हमने जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया है, वो नया है, तो आप खुद ब खुद नया मान लीजिए। आपके लिमिटेशन है, कोशिश कीजिए उसको सर्च कर लेने के। अगर आपको उससे मिलता जुलता कोई कंपाउंड नहीं मिल रहा है, तो उसको नोवेल मान लीजिए। लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि वेदर इट इज नोवेल और नॉट नोवेल। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनको चेक करके बताना पड़ता है कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है वो नोवेल है कि नहीं है। तो आप इस तरह से अपने आप को नोवेल कंसीडर कर सकते हैं। नाउ जो टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में आपने क्या ऐसा एडवांसमेंट डाला, क्या ऐसी चीजें चेंज कर दी जिसमें उसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया, यानी जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी से आपका टेक्नोलॉजी कैसे सुपीरियर है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए एक कंपाउंड X है, ये कंपाउंड A + B + C से मिलकर बना है, और इस कंपाउंड को बनाने में 24 आवर का टाइम मिलता है, और आपको 85% के आसपास यील्ड मिलता है। आपने किसी कंपाउंड X को बनाने के लिए एक नया आपने फॉर्मूला सजेस्ट किया, एक प्रोसेस लेके आया कि देखो भैया, हम तो इस कंपाउंड को एक ही स्टेप में बना देंगे, तो क्या ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने स्टेप्स कम कर दिए, नंबर ऑफ डेज कम कर दीजिए, और जो आपका मेथड है, जो आपका प्रोसेस है, वो एक नया प्रोसेस है, और उससे सेम मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है। हालांकि एक्स मॉलिक्यूल पहले से नोन है, तो आप एक्स को क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन आप जो नया प्रोसेस वाई लेकर के आ रहे हैं एक्स को बनाने का, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका नोवेल है और उसके अंदर कोई इन्वेंटिव फीचर है, तो उसके लिए आप पेटेंट, जैसा कि वाइस चांसलर है कि हम जो इन्वेंशन लेके आ रहे हैं उसका क्या कमर्शियलाइजेशन है, इसको आम जनता को क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह का इंडस्ट्री जो आपने इन्वेंशन बनाया, उसका इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है, अगर ये 3 पैरामीटर्स अगर आपके अंदर है, तो उसके लिए आप पेटेंट के लिए एलिजिबल है, आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ना। उसके अलावा भी कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन 3 वगैरह है, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि हमारा इन्वेंशन इसमें तो फॉल नहीं कर रहा है। नाउ आपको मैं बताऊं कि पेटेंट अगर पास है, अगर आप रिसर्च है, और इस तरह का कुछ जो मैंने बातें बताई कि आपके रिसर्च वर्क में नोवेल है, इन्वेंटिव है, और इंडस्ट्री एप्लीकेशन भी है, तो उसका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। कैसे फाइल कर सकते हैं? किसी एजेंट को हायर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पेटेंट एप्लीकेशन एजेंट के द्वारा फाइल होगा, आप खुद ही एक इन्वेंटिव खुद ही अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी, जैसे फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 में ये बताना पड़ता है कि कौन सा इन्वेंटर है, कौन सा एप्लीकेंट है, क्या एड्रेस है एप्लीकेंट का, ये सारी चीजें आपको फॉर्म 1 के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। फॉर्म 2 के अंदर मैं आपको बता दूं आसान लैंग्वेज में कि आपने कभी रिसर्च पेपर लिखा है। रिसर्च पेपर में आप क्या लिखते हैं? जब आप जर्नल के अंदर पेपर भेजते हैं, तो उसमें आप क्या लिखते हैं? उसमें आप यही लिखते हैं कि पहले तो लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद बैकग्राउंड लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं आप कि हमारा इन्वेंशन क्या है, समरी लिखते हैं, उसके बाद आप फिर क्या लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेक्शन आता है जहाँ पे IR, NMR, UVs का डाटा लिखते हैं, और लास्ट में CSIR वगैरह को जहाँ से आपने फंडिंग ली है लेकिन थैंक यू कह देते हैं। यहाँ पे थैंक यू वाले सिर्फ नहीं लिखना है, बाकी सारे कुछ उसी फॉर्मेट में लिखना है। सिर्फ लास्ट में एक चीज लिखी जाती है, दैट इज क्लेम। यहाँ पे आपको क्लेम करना है। क्लेम में ये चीज लिखी जाती है कि आपने क्या इन्वेंशन किया है और क्यों, क्या चीज का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट दे, तो ये चीज आपको इसमें ऐड करना पड़ता है। ये फॉर्म 2 है। फॉर्म 3 के अंदर जो है आपको बताना पड़ता है कि इंडिया के बाहर आपने एप्लीकेशन कहाँ फाइल किया है। फॉर्म 5 में बताना पड़ता है कि इन्वेंटर कौन है इस इन्वेंशन के अंदर। फॉर्म 18 के अंदर बताना पड़ता है कि हम प्लीज ऑफिस को ये बताना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिस को, पेटेंट ऑफिस को, कि हमारा एप्लीकेशन जो हमने फाइल किया है उसको एग्जामिनेशन करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए। ये फॉर्म 2 में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें फॉर्म 2 के अंदर होनी चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन ये है
कि हम क्या फाइल ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर यह है कि आप चाहे तो फाइल ऑफलाइन भी कर सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। एक आदमी कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग करके वो 10% रुपीज कम कर सकता है, मतलब आपको 10% का फ्री रिलैक्सेशन है। एक आम इंसान को या एक यूनिवर्सिटी को जो है अप्रोक्सीमेटली 5600 रुपीज खर्च होता है। जब प्रोसीडिंग आगे थोड़ा सा और पैसा आपको लग सकता है, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, बट एक आम इंसान को अप्रोक्सीमेटली 5600 रुपीज के आसपास खर्च होता है पेटेंट कराने का। ये जो प्रोसीजर है, फाइलिंग प्रोसीजर है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आकर के आप पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। जैसे आप जाएंगे इस साइट के ऊपर में, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, आपको इस तरह का एक वेब पेज मिलेगा। यहाँ पे पेटेंट लिखा होगा, जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सब यहाँ पे लिखी हुई है। पेटेंट लिखा हुआ है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है, कॉपीराइट है, सेमीकंडक्टर है। ये सारी चीज आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो जैसे आप पेटेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्म्स एंड फी खुलेगा। फॉर्म्स एंड फी के अंदर में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के फॉर्म्स खुलेंगे, और जब फॉर्म्स खुलेंगे आपको डिफरेंट फॉर्म्स होंगे और उनके सामने उनके पैसा भी लिखे हुए होंगे कि इस फॉर्म को अगर दाखिल करना है तो इसका टाइम लिमिट क्या है और कितने पैसे लगते हैं। नाउ इसके ऊपर आकर के फिर आपको इसी के ऊपर पेटेंट के ऊपर आकर के आपको क्लिक करना है कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक वेब पेज ओपन होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको यस पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और बात है कि जब आप ऑनलाइन फाइल कर रहे होंगे तो दो तरह की फाइलिंग आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक ई सिग्नेचर होता है। तो आई एडवाइस यू कि अगर यूनिवर्सिटी है या कोई इंडिविजुअल है तो डिजिटल सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। आप ई फाइलिंग ई सिग्नेचर कर सकते हैं, ई सिग्नेचर परचेस कर सकते हैं। आप हमारे इसी वेबसाइट्स के अंदर आकर के 250 रुपए का अप्रोक्सीमेटली ई मुद्रा से खर्च होता है। आप पहले ई सिग्नेचर ले लीजिए और फिर उसके बाद जो है ना पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करने का प्रोसीजर पे ई मुद्रा के साइड डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंसेशन में आप ई सिग्नेचर ले सकते हैं और वो सिग्नेचर पहले आप ले लें और फिर पेटेंट एप्लीकेशन जो है आप फाइल कर सकते हैं ना। उसके बाद आपको ये फाइलिंग का प्रोसीजर है। जब ओपन करेंगे तो ये सबको आपको करना पड़ेगा। कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं फिल करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको ओटीपी वगैरह आएगा। आप तैयार करके आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग करना है तो। नाउ देयर इज सम प्रोसीजर। जनरली लोग सोचते हैं कि पेटेंट फाइल करने में बहुत टाइम लगता है, पेटेंट एप्लीकेशन को लेने में, पेटेंट लेने में बहुत टाइम लगता है। इनफैक्ट ऐसा था पहले, लेकिन ऑफिस के अंदर जैसे मैंने बताया बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन हुए हैं जिनके अंदर वो टाइम लैग कम हो गया है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बेसिक रूल बनाई है, उस रूल को ऑप्ट करके आप विद इन 1 ईयर पेटेंट जो है ले सकते हैं। जैसे अगर आप स्टार्टअप है या स्मॉल एंटिटी है या आपके रिसर्च वर्क में कोई फीमेल एप्लीकेंट है, इस तरह का कुछ भी इस स्लाइड के अंदर में लिखा हुआ है तो आप जो है एक्सपेडाइट रूट को ऑप्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म 9 के अंदर अर्ली पब्लिकेशन का रिक्वेस्ट होता है। अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो विद इन 1 ईयर जो है आपको विद इन 18 मंथ्स आपको पब्लिश होगा। लेकिन अगर आप अर्ली पब्लिकेशन का रिक्वेस्ट डालते हैं तो विद इन 1 मंथ वो आपका पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगा। और पब्लिश होने के बाद और आपको 18A फॉर्म डालना है और विद द फीमेल इन्वेंटर का आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे पैन कार्ड वगैरह है। अगर इस रूट से आप आते हैं तो फास्ट ट्रैक पे आपका केस होगा और जल्दी विद इन, अगर आप पेटेंट ग्रांट होने के लायक हो तो विद इन 1 ईयर आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कुछ बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। वो ये बात यह है कि जनरली साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि वह अपना पेपर पब्लिश करते हैं, जर्नल में पेपर को भेजते हैं। देखिए, जर्नल में पेपर को भेजने से और पेटेंट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने रिसर्च वर्क को जर्नल में भी पब्लिश कीजिए, आप अपने सेम रिसर्च वर्क का पेटेंट भी लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम इस बात की है कि आपको क्या करना। अगर आपका कोई इन्वेंशन है, कोई आपने रिसर्च वर्क किया है तो पहले पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। पहले ये पेटेंट लेने का कंडीशन है, पहले पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए और उसके बाद जैसे आज हमने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दिया और कल जाकर के आप जर्नल के अंदर जिस जर्नल में भेजना चाहते हैं, एसीएस में भेजना चाहते हैं, जहां भेजना चाहते हैं आप उसको भेज दीजिए। तो पहले आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है और फाइल करने के बाद ये भी नहीं देखना है कि हमारे पेटेंट का क्या हुआ,
हमारा पेटेंट ग्रांट हुआ या हमारा पेटेंट रिफ्यूज हुआ। ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइल कर दीजिए और कल जाकर के अपने सेम वर्क को आप पेपर में, रिसर्च पेपर के अंदर आप जहां जर्नल में भेजना चाहते हैं भेज दीजिए। ये काम करना है। लेकिन इसके उल्टा अगर आपने किया, पहले आपने जर्नल में भेज दिया, पब्लिश कर दिया और उसके बाद आप अपने वर्क का पेटेंट कराने चलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है और उसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि सर ऐसा हो गया तो हम क्या करें? अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए पहले आपने पेटेंट नहीं फाइल किया, पहले आपने पेपर पब्लिश कर दिया, ऐसा हो गया और आपका ही पेपर है, आप ही इन्वेंटर है और सेम कंटेंट है, तो 1 साल के अंदर अगर ऐसी कुछ हो गई है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर ये घटना घट गई है तो कोई बात नहीं, आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और पेटेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा है तो फिर आपका ही वो डॉक्यूमेंट आपके लिए, आपके पेटेंट एप्लीकेशन के लिए नोवेल्टी किलिंग बन जाएगा और फिर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सिंपल सी पेटेंट की फिलॉसफी है, जो पब्लिक डोमेन में कोई चीज है तो उसका पेटेंट नहीं मिलता, राइट? तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने में आपको पता है कि आपके स्टेप, आपके रिएक्शन का जो स्टेप है वो 4 स्टेप का प्रोसेस है या 5 स्टेप का प्रोसेस है और आपको लगता है कि 90% आपने या 85% आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं 100% कंप्लीशन ऑफ योर रिसर्च वर्क। अगर आपको लगता है कि हमारा 90% रिसर्च वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और 10% विद इन 1 ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट होता है पेटेंट फाइलिंग। अगर हम और आप सेम टॉपिक पे, सेम प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं और जो आदमी पहले पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर देगा उसको पेटेंट मिल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप क्या करें, जल्दी से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दें, इवन तो आपका रिसर्च वर्क 100% कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी, और विद इन 1 ईयर आप अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करके फिर से फाइल कर दें। तो ये प्रोसीजर आप ऑप्ट कर सकते हैं टू टेक अर्ली प्रायोरिटी। नाउ दुनिया में कितना भी कोई सगा ना हो, क्यों ना हो, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं तो अपने जो रिसर्च वर्क है किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइडिया को कॉपी होते देर नहीं लगती है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, ब्रीफ में आने वाले स्पीकर भी आपको बताएंगे एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है। तो एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होता है, इसको आसान तरीके से मैं आप सबको बताता हूँ। जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब आपको रिसर्च पेपर आप भेजते हैं तो जर्नल में भेजते हैं, वहां पे रेफरी होता है। रेफरी क्या करता है कि आपके पेपर को पढ़ता है, कुछ करेक्शन सजेस्ट करते हैं और करेक्शन आपको फिर भेजते हैं। फिर आप क्या करते हैं, करेक्शन करके फिर आप उसको फिर से भेज देते हैं, फिर वो रीचेक करता है, उसको लगता है कि आपका रिसर्च वर्क पब्लिश होने के लायक है तो पब्लिश कर देता है, अदरवाइज आपको लौटा देता है। सेम प्रोसीजर पेटेंट एग्जामिनेशन के अंदर भी होता है। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया, आपका एप्लीकेशन एग्जामिन होगा। पेटेंट ऑफिस में एग्जामिनर होते हैं जो पेटेंट एप्लीकेशन को, जो आपने एप्लीकेशन दाखिल की है उसको एग्जामिन करते हैं इंडियन एक्ट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। एग्जामिन करने के बाद अगर कोई लैकुना है तो वह आपको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के टर्म को FER बोलते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वो आपके पास पहुंचाई जाती है और उसका आप जवाब देते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर ने कुछ गलत समझा है और आपका इन्वेंशन कोई और है या कुछ लैकुना है, तो आप उसको आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है, हम तो ये रिसर्च किया है। तो उसके बाद आप उसको जवाब दाखिल करते हैं और दाखिल करने के बाद इसको जवाब दाखिल करने का टाइम पीरियड होता है। जिस दिन से वो लेटर आपको रिसीव हुआ है उसके 6 मंथ के अंदर आपको ये जवाब दाखिल करना पड़ता है। 3 मंथ का आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा होता है। तो जब आप जवाब दाखिल कर देंगे उसके बाद वहां पे फिर एग्जामिनर उसको लुक करेगा और फिर उसमें अगर कोई लैकुना नहीं है, कोई कमियां नहीं है सारी, तो जो कंट्रोलर को वो पेटेंट ग्रांट करने की तरफ मूव करते हैं और आपको पेटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात समझना है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पेटेंट एप्लीकेशन हमने फाइल कर दिया और पब्लिश हो गया, इसका मतलब मुझे पेटेंट मिल गया। ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पेटेंट आपको मिलेगा तो भारत सरकार की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होगी कि इस प्रोसेस के लिए या इस कंपाउंड के लिए आपको पेटेंट दिया जा रहा है। LP बोलते हैं, लेटर ऑफ पेटेंट बोलते हैं उसको। तो सिर्फ पेटेंट एप्लीकेशन का पब्लिश होना पेटेंट मिलने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो तो एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें सरकार आपके इन्वेंशन को पब्लिश कर रही है। तो पब्लिकेशन और पेटेंट ग्रांटिंग में बहुत डिफरेंस है। पेटेंट ग्रांटिंग जब ओवरऑल सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हैं तब आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके ने जो अभी भी दाखिल किया सबमिशन, उसमें अभी भी कुछ कंट्रोलर को और लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आपको नेचुरल जस्टिस में हियरिंग का मौका देते हैं और हियरिंग के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हियरिंग हो जाती है। आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक के ऊपर आपको उस दिन टाइम पे
आना पड़ेगा और आपको अपने एप्लीकेशन को डिफेंड करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भाई ये बातें हैं, आपका क्या कहना है, आप उनको बताइएगा सर हमारा तो ये रिसर्च है। और फिर उसके बाद हियरिंग के बाद दो बातें होगी, कंट्रोलर अगर सर्टिफाई हो जाएगा या कंट्रोलर को लगता है कि सर्टिफाई करने का मतलब कंट्रोलर के सर्टिफाई होने का मतलब एक्ट एंड रूल के हिसाब से एक्ट और रूल अगर सेटिस्फाई करता है आपका इन्वेंशन तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, अदरवाइज पेटेंट को रिफ्यूज कर दिया जाता है। रिफ्यूजल का मतलब आपको पेटेंट नहीं मिला। ये पूरी प्रोसीजर होती है पेटेंटिंग सिस्टम के अंदर। नाउ आपके स्टेट का जुडिक्शन मुंबई है, वहां पे आप अपना अगर आपके पास कोई पेटेंट एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जाकर के आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं अपनी बात इस बात से खत्म करूंगा कि कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर आप कोई स्टूडेंट्स है और आप चाहते हैं कि आईपीआर के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड के अंदर अगर आपको अपना कैरियर देखना है तो कैरियर अगर देखना है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के जॉब होते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब है और एक अदर जॉब है। अदर जॉब मतलब प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आपके पास क्या ऑप्शन है, आप एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन बन सकते हैं। ये जो पोस्ट है वह ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट होता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट एमएससी होता है। एमएससी अगर आप केमिस्ट्री में है या एमएससी अगर आप फिजिक्स में है या एमएससी आप बायोलॉजी में है, इन सब डिसिप्लिन में अगर साइंस में एमएससी है विद 55% मार्क्स अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसका जो सिलेबस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करके एग्जाम आप एग्जाम दीजिए और इसका सिलेबस बिल्कुल कभी आपने अगर नेट और जेआरएफ का अगर आपने एग्जाम दिया हो तो यही इसका सिलेबस होता है। सेम सिलेबस इसी पैटर्न पे एग्जाम होती है। अगर आप इंजीनियरिंग साइड से बी या बीटेक है तो बी या बीटेक आपको होना चाहिए विद 55% मार्क्स। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप जब जॉब निकले अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ये ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट है। इस तरह से एग्जामिनर आप ट्रेडमार्क बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एसेंशियल कंडीशन है कि एलएलबी होना चाहिए। पेटेंट के लिए एग्जामिनर बनने के लिए एलएलबी होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे एलएलबी होना चाहिए। पेटेंट के लिए साइंस होना चाहिए और ट्रेडमार्क के लिए साइंस होना कोई जरूरी नहीं है। कॉपीराइट के भी एग्जामिनर बन सकते हैं। तो ये सब हमारे ऑफिस के अंदर एंट्री लेवल का पोस्ट होता है। इसके बाद सारे पोस्ट प्रमोशन से फिलअप किए जाते हैं। आप पेटेंट एजेंट बन सकते हैं, ये अदर जॉब है। पेटेंट एजेंट का क्या काम होता है, जिस तरह से एक वकील होता है, वकील क्या करता है आपके बिहाफ में आपका केस जज साहब के सामने कोर्ट में रखता है। ये वकील का काम होता है आपके बिहाफ में। आप चाहे तो खुद ही लड़ सकते हैं अपना केस, नहीं तो जज साहब के सामने आप नहीं जाना चाहते तो वकील हायर कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से आप चाहे तो खुद ही अपना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर लीजिए और अगर नहीं खुद कर पाते तो पेटेंट एजेंट के थ्रू फाइल कर सकते हैं। ये जो पेटेंट एजेंट होते हैं सिर्फ दो आदमी होता है। अगर आपने इन्वेंशन किया तो आप ऑथराइज पर्सन लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए ये पेटेंट एजेंट है, लीगल ऑथराइज पर्सन टू साइन ऑन द डॉक्यूमेंट। तो पेटेंट एजेंट कौन बन सकता है, पेटेंट एजेंट में और एक नॉर्मल वकील में थोड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल वकील कोई बन सकता है जिसके पास एलएलबी की डिग्री हो, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट्स का हो। लेकिन पेटेंट एजेंट वही बन सकता है जिसका साइंस में ग्रेजुएट हो। साइंस में अगर ग्रेजुएट है तो आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन निकालते हैं एग्जाम का, आप उसको अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए। अगर आप एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको भारत सरकार रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट बना देगी और आप अपना पेटेंट एजेंट बनने के बाद प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट लॉ फॉर्म में। आजकल क्या होता है कि एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ पेटेंट के लिए साइंस जरूरी है, ट्रेडमार्क के लिए, कॉपीराइट के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, अदर जो आईपी है उसके लिए साइंस होना शर्त नहीं है। नाउ आजकल आईपीआर सेल खुल है। अगर आपको आईपी का अच्छा नॉलेज है तो आप उसमें आईपी एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। आईपी एक्सपर्ट के बहुत सारे काम होते हैं। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह होती है तो क्या आईपी इवैल्यूएशन की काम में वो लोग लगे होते हैं। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। ये काफी सैलरीड जॉब है। इसमें बहुत सम्मान भी आप फील करेंगे अगर इस वर्क में करते हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको कभी भी इस तरह का काम करने का मौका मिले तो आप इसको कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बोथ आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी आकर के और प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हैं। कैन आई आस्क, वी हैव 4 or 5 minutes or shall I stop my lectures? Please. 4 or 5 minutes और मेरे पास है या मैं फिनिश करूँ? You can continue, sir. You can continue. Okay. So only 4 or 5 minutes. Now, the second IP, the intellectual property is copyright. ये कॉपीराइट क्या होते हैं? ये कॉपीराइट जो है एक एक्सक्लूसिव राइट है गिवन टू द क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। जो आप कोई काम करते हैं, किस तरह का ओरिजिनल वर्क, जैसे आप इस स्लाइड के अंदर देखिए कोई लिटरेरी वर्क है या कोई आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी वर्क में किस तरह का वर्क,
लिखने पढ़ने का काम, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, इस तरह का कोई काम अगर आप करते हैं तो ये लिटरेरी वर्क के अंदर आता है। आर्टिस्टिक वर्क, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग या कोई ड्रामेटिक वर्क या कोई म्यूजिकल वर्क या कोई साउंड रिकॉर्डिंग या सिनेमेटोग्राफिक वर्क, इस तरह का कोई भी काम करते हैं जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो उस तरह के वर्क का आप कॉपीराइट करा सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि बतला दूं कि कॉपीराइट के लिए आइडिया का नया होना जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को किताब लिखनी है, किसी को बुक लिखनी है, तो बुक तो किसी टॉपिक पे लिखेंगे और वो चीज पहले से कंटेंट मार्केट में है, सब लोग जानते हैं। तो आइडिया का नया होना जरूरी नहीं है। आइडिया पुराना हो सकता है लेकिन उसको लिखने का तरीका, अंदाजे भी डिफरेंट होना चाहिए। आप एक रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन से मान लीजिए सपोज हार्डकोर बात करूं केमिस्ट्री की, तो उसी रिएक्शन को समझाने का, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन करने का, डिफरेंट तरीके से आप एक्सप्लेन करके उसको समझा सकते हैं। तो अगर आपने किसी पुरानी चीज को ही नई तरीके से आपने अपने अंदाज में नई क्रिएटिविटी के साथ उसको आपने लिखा है तो वह आपका क्रिएटिव वर्क है और उसका आप कॉपीराइट करा सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि पेटेंट जब तक कि आपको ग्रांट ना हो जाए तब तक कि आपका मोनोपोली राइट नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का कोई कॉपीराइट है, क्यों कैसे पेटेंट से कॉपीराइट डिफरेंट है, इस बात को समझिए कि कॉपीराइट के लिए कोई सरकार के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मस्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई ओरिजिनल वर्क किया है और आज आपने ओरिजिनल वर्क जो कर लिया और उसमें क्रिएटिविटी आपने की है, तो जिस दिन क्रिएट हुआ, जिस टाइम क्रिएट हुआ, उसी टाइम से ये आपका अधिकार है, ये आपका कॉपीराइट है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना कोई शर्त नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने 4 लाइन की कविता लिखी या आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा, तो अभी लिखा आपने, यहाँ पे सी लिख के सर्कल कर दीजिए, आज का डेट डाल दीजिए और आप अपना नाम लिख दीजिए। और इवन करते हैं कि इसकी भी जरूरत नहीं है। जब क्रिएटर्स ने क्रिएट कर दिया उसी टाइम से वो उसका कॉपीराइट हो जाता है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर आपके पास कॉपीराइट है तो 2 तरह के बेसिकली इस पे राइट होता है, एक इकोनॉमिक राइट होता है, एक मोरल राइट होता है। इकोनॉमिक राइट और मोरल राइट को मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ कि जब कोई किताब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप पब्लिशर से बात करते हैं। जनरली आप पब्लिशर से बात करते हैं कि मैंने एक बुक लिखी है, आप इसको आप क्या करें कि पब्लिश करें, तो उसमें आप 4% या 5% जो भी रॉयल्टी आपकी तय होती है लेकर के पब्लिशर को आप बुक दे देते हैं। तो पब्लिशर के पास क्या होता है, उस किताब को सेल आउट करने का, उस किताब को पब्लिश करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा राइट हो जाता है। तो उस समय आपने अपनी इकोनॉमिक राइट, जो इसके अंदर ये सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइव रिकॉर्डेड है, ब्रॉडकास्टिंग है, इस तरह की सारी चीजें आपने पब्लिशर को दे दी। लेकिन एक चीज याद रखिए, उसके अंदर अगर उस किताब के अंदर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर ऐड करना है या डिलीट करना है, यानी जो आपका ओरिजिनल वर्क है उसको छेड़छाड़ करना है, कोई डिस्टॉर्शन करनी है, तो उसके लिए वह पब्लिशर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वह पब्लिशर आपके वर्क में नहीं कर सकता। और ये कौन सी राइट है, ये मोरल राइट है। बिना आपके परमिशन के पब्लिशर आपके बुक में कोई डिस्टॉर्शन नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है, मोरल राइट के अंदर लिखा हुआ है। तो कॉपीराइट में 2 तरह का बेसिकली राइट, इकोनॉमिक राइट और मोरल राइट। इकोनॉमिक राइट ट्रांसफर अगर कर भी देते हैं, इकोनॉमिक राइट अगर आप बेच भी देते हैं, तो मोरल राइट जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, ये आपके साथ ही रहती है। नाउ एक अगर आपके पास कॉपीराइट है तो उसका जो लाइफ टाइम होता है 60 इयर्स, मरने के बाद जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक उसका राइट आपके पास है, और आफ्टर द डेथ 60 इयर्स तक के आपको उसका राइट है। नाउ अगर आप कॉपीराइट कराना चाहे तो करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपने कॉपीराइट करा लिया तो एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाता है कि हाँ हमारा ये चीज है और मैंने इसका कॉपीराइट करा दिया है। तो कल को आपको कोई फ्यूचर में कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे या कोई इंफ्रिंज करता है तो आपके पास एविडेंस है कि हमारे पास जो है ना, हमने कॉपीराइट करा रखा है। तो 500 रुपीज पे कॉस्ट आता है, 500 रुपीज पे करके आप उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। पूरी भारत में, ऑल ओवर इंडिया में एक ही कॉपीराइट ऑफिस है, दिल्ली के अंदर द्वारका सेक्टर 14 के अंदर है। आप यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉपीराइट करा सकते हैं, ये कुछ फॉर्म से फिलअप करने के। नाउ एक लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मान लिया जाए ये एक प्रोफेसर है, अगर कोई प्रोफेसर क्लास में आकर के सेम इक्वेशन को लिखते हैं और सेम चीज आप किसी बुक से आप आकर के पढ़ा देते हैं या नोट्स बना करके बच्चों को दे देते हैं, तो ये कॉपीराइट का वायलेशन है कि नहीं है? तो आंसर है, ये कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। एक प्रोफेसर हर ऑथर से जाकर के नहीं पूछेगा कि हमें आज भी टॉपिक पढ़ानी है तो मैं आपका ये पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप एक किताब से कॉपी कर सकते हो नहीं कर सकता। ये कुछ चीजों में छूट है, तो यहाँ पे प्रोफेसर को छूट है। हाँ, एक काम वो नहीं कर सकते, जैसे वह पढ़ा सकते हैं, नोट्स बना के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आप अगर चाहे कि हम उसको सेल आउट करें और उससे कुछ पैसा अर्न करें, तो ये
नहीं कर सकते, ये कॉपीराइट का वायलेशन है। और अगर आप ऐसा अगर किसी कॉपी का इस तरह से कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसका आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप उसके लिए लॉ का सहारा ले सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। आपको किसी को कोर्ट में कोई एविडेंस पेश करना है तो उसके लिए भी अलाउड है, आप एविडेंस पेश कर सकते हैं। कोई आर्टिकल लिखनी है तो उसके लिए रेफरेंस दे करके आप ये सारी काम कर सकते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स अक्सर लोग लिखते हैं, इन सब चीजों में कॉपीराइट के लिए की तरफ से अलाउड है। सो आई थिंक विद दिस ऑल, नेक्स्ट स्पीकर को भी बोल रहा है तो दो तीन और थे। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, दो गुड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए ट्रेडमार्क का सहारा लिया जाता है। उसके बाद में ये भी एक मोनोपोली राइट है। आर लिख करके सर्कल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, बिना उसके परमिशन के हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रेडमार्क जो होता है ये भी एक मोनोपोली राइट है, 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। और उस तरह से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत होता है कि किसी इलाके की कोई खास प्रॉपर्टी होती, कोई चीज जो एग्रीकल्चर के फील्ड का हो या हैंडीक्राफ्ट के फील्ड का हो या कोई नेचुरल चीज हो जो बहुत हाई क्वालिटी का है और उस क्वालिटी का चीज उसी इलाके में मिलता है, तो ऐसी चीजों के लिए भारत सरकार जीआई टैग देती है। तो जीआई भी एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। जैसे बनारस की सिल्क साड़ी है, मेरठ का सीजर्स है, गोरखपुर का टेराकोटा है, ये सब सारी चीजें जीआई के अंदर आती है। मुजफ्फरपुर बिहार की शाही लीची है, उड़ीसा और बंगाल का रसगुल्ला है, कोल्हापुर का चप्पल है, नागपुर का ऑरेंज है, कांचीपुरम की सिल्क साड़ी, दार्जिलिंग का टी फर्स्ट जीआई टैग इंडिया का है। तो ये सारे कुछ इमेजेस हैं जीआई टैग के लिए होते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई आप गुड्स बनाते हैं तो उस गुड्स का एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा करने के लिए जितना अच्छा डिजाइन होगा उतना बेहतरीन वो आपको वो सेल आउट होगा। तो इस तरह का डिजाइनिंग करते हैं प्रोडक्ट को और गुड्स को एस्थेटिक अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए आप डिजाइन का सहारा ले सकते हैं। तो डिजाइन कैसे कर सकते हैं आप, 3D ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग शेप के अंदर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में, पैटर्न में डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी इस तरह का कोई डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है जो हम आपके पास है, तो उसका आप जो है ना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10 इयर्स का मोनोपोली राइट देगी, 5 इयर्स के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये डिजाइन के लिए है। डिजाइन एप्लीकेशन जो है कोलकाता के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फाइल कहीं भी कर सकते हैं जो आपका जुडिक्शन है, लेकिन कोलकाता से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है डिजाइन के लिए। ये कुछ फॉर्म्स वगैरह, फॉर्म 1, फॉर्म 2 वगैरह ये सब फिलअप करने पड़ते हैं। अगर आपको डिजाइन कराना है तो एक आम आदमी को 1000 का खर्च आता है एक आम आदमी को डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये टेरिटोरियल राइट है। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये टेरिटोरियल राइट है, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, सब वो टेरिटोरियल राइट है। कोई भी अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसको पहले प्रोटेक्ट करें, पब्लिश ना करें, पहले प्रोटेक्ट करें। ये टेरिटोरियल राइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन करती है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। पेटेंट आपको 20 इयर्स के लिए, आपको कॉपीराइट होल लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स, डिजाइन आपको 10 इयर्स प्लस 5 ईयर, ट्रेडमार्क 10 इयर्स प्लस 10 इयर्स, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 10 इयर्स प्लस n नंबर ऑफ टाइम 10 इयर्स के लिए रिन्यू कर सकते हैं। कोई आदमी अगर आपके कोई राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरह से अगर आपके पास कोई बंगला है उसका आपको या मकान है उसका टैक्स देना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसकी मेंटेनेंस फी आपको पे करनी पड़ती है। कॉपीराइट के लिए आपको कोई मेंटेनेंस फी यानी रिन्यूअल फी नहीं देनी पड़ती। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो खुद ही जाकर के आप उसका क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू टू लेक्चर टू लिसन माय लेक्चर सो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Now the session is open for doubt clarification. We have time for 1 or 2 questions. Any question, please? Sir, may I ask? Yes, you can ask. Ashlesha here, sir. Sir, my question is that how can I recognize is my idea patentable or not? So as I said, idea is not intellectual property. So first of all, you have to express your idea in any tangible forms. And if it is expressed in the forms of inventions, then we have 3 criteria to check whether it is novel, whether it is inventive, or whether it is industry applicable or not. So these are the criteria. By applying that, you can check whether your idea is, I repeat again, idea is not any intellectual property. You have to first express your idea, then you have to check whether your idea, the expression of your idea is intellectual property or not. And that's why I'm telling in the patent, we have the 3 criteria to check.
novel, inventive, and industrial application. That must be there. Okay, sir. And second one is, sir, I can renew the digital signature. Digital signature, you can, I think, I don't have an idea, you can renew or not. So you may please. I'm sorry. Okay, sir. No, no, okay. Thank you so much, sir. Any other question, please? If someone have any question, then he can write in chat box or directly mail to Atikullah sir. Atikullah sir has nicely explained what is intellectual properties and what is its importance to universities and other institutions, and he has also planned how to file patents. I congratulate Atikullah sir for wonderful presentation. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. So next move to our next lecture, that is from Dr. Seema, Scientist CSIR Innovation Protection Unit, New Delhi, and this session, for the nice introduction and for brief introduction, I would like to invite Dr. Charu Arora, Associate Professor, Department of Chemistry, Guru Ghazidas Vishwavidyalaya. Thank you, madam. A very good afternoon to one and all. It's a pleasure for me to introduce Dr. Seema, who is working as scientist at Innovation Protection Unit, CSIR. Prior to this, she has served Central Government Office as a Group A Gazetted Officer at the Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. She is a recipient of appreciation letter by Controller General of Patent and Design for commendable contribution in examination of patent application during 2013 and 14. She has visited Japan Patent Office for IPR training course during September 16 to 28 November 2014. She has delivered several invited lectures on IPR and chemistry at various institutions and universities. She has completed her post-graduation and PhD from DDU Gorakhpur University. Now I invite her to deliver her lecture on patent structure and filing procedure. Seema ma'am. Thank you, Charu ma'am. Thank you for giving me such a great opportunity for delivering my lecture relating to the patent procedures and patent filing in India. Okay, thank you. Now come to the topic. My topic is just a moment. My slide is visible? No, ma'am, actually not visible right now. Give me 1 minute. कितने पार्टिसिपेंट दिखा रहा है मुझे?
पता नहीं, यूट्यूब में कहाँ दिखेगा कितने लोग हैं। व्यूअर 2, यहाँ लिस्ट लाइव व्यूअर 2, यहाँ पे दिख तो रहा है 2। Ma'am, previously it was okay. It's just you have to minimize window, I think, and you have to and just open the PPT window. एक्चुअली होल स्क्रीन शेयर कर रही थी, टैब शेयर करेंगी तब हो जाएगा। अब हो गया, देखते हैं। फोन कीजिए। हाँ सीमा, उसमें ना तुम पीपीटी को क्लिक करो, पहले शेयर करने के बाद क्लिक करो तो आ जाएगा। ये लो, 1 मिनट नीरज से बात करो। मैम आप होल स्क्रीन ऑप्शन चूज कर रहे हैं, आप पीपीटी का विंडो का ऑप्शन होगा वो चूज कीजिए। शेयर किया ना आपने? शेयर करने के बाद 3 आ रहा होगा, विंडो, होल स्क्रीन, ऐसा कुछ आ रहा होगा ना। वो होल स्क्रीन वाला आप शेयर कर रहे हैं मैम। यस मैडम, होल स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो। कोई दिक्कत नहीं मैडम, आप इंटायर में भी जा सकते हैं, बस आपको मिनिमाइज करना है, पीपीटी आपको ओपन रहे, फिर वो पीपीटी विजिबल हो जाएगा। नहीं मैडम, आप एक बार जाइए, मैं बता रहा हूँ। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें और दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूँ। या बोलो उसको 1 मिनट सर, मेल कर दीजिए, बोल दीजिए मेल कर दीजिए उसको, बोलो मेरे को सेंड कर दीजिए। ये विंडो में जाइए। हाँ Now it is okay, ma'am. फुल स्क्रीन करके बोलने के लिए। हाँ, स्लाइड शेयर में ऑप्शन में चले जाइए। हाँ दिख रहा है मैडम, आप उसको बस स्लाइड शेयर का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जूम आउट जूम इन जो होता है ना मैडम, प्लस माइनस वाला साइन के बस बटन में, उसमें आप चले जाइए। उनको बोलो नीचे की तरफ, नीचे फुल लास्ट बार पे। हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैडम, उसको वो तो सही था मैडम, विजुअल तो था, उसमें आपको वो बस कर देना था। हम फिर से करके वो विंडो सीरीज में आप जाएंगे, फिर से वो पीपीटी दिखेगा आपको, उसमें नीचे साइड में एक बटन स्लाइड शेयर है, उसको करके वो बड़ा हो जाता है। हाँ वही देख रहे हैं यहाँ खुला है क्या।
नहीं यहाँ तो नहीं है, आपका है क्या? भरत का। तो वहाँ से मैडम अभी जस्ट जैसे किया था उससे चल जाता विजुअल। हाँ आप ओपन कर दीजिए। वो नहीं, वो नहीं होगा ना, स्लाइड ओपन नहीं है। स्लाइड ओपन नहीं है मैडम। फाइल को पहले ओपन करें वो बोलो। नहीं तो आपको टेबल पे वो जो सीपीटी वाला जो फाइल वही दिख रहा है। आप ना उसको पहले से ओपन कर लीजिए। पहले ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप सेव कीजिए। पहले आप पीपीटी ओपन कर लीजिए। अब उसके बाद आप शेयर कीजिए। अब आ गया। वो पीपीटी आपका दिख रहा है मैडम, उसमें स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दीजिए मैडम। बस फुल स्क्रीन करने से काम आ जाएगा। उसको नीचे आ जाइए मैडम, मैं बता रहा हूँ आपको प्लस माइनस का है, जूम आउट की जूम इन के जस्ट बगल में उसको जस्ट बगल में और उसको क्लिक कर दीजिए। हाँ वही स्लाइड से उसको आएगा अगर क्लिक हो गया होगा तो वो जरूर उसमें स्लाइड को इसको ना बस वो स्लाइड शेयर नहीं हो पाएगा। अरे ठीक है ठीक है मैडम, आप शुरू कर दीजिए। वो दिख रही है विजुअल। हाँ विजुअल मैडम, यू मैं प्रोसीड मैडम प्लीज। यस यस मैडम। हाँ स्टार्ट कर दो सीमा, दिख रहा है। Madam, kindly unmute yourself. इधर से वेट कर दो। Madam, your voice is not audible actually. Unmute yourself, please. Just किया जाए उनको कि अनम्यूट करें। my slide is visible? Yes. Can I start? Yes, ma'am. You can start. Okay. Sorry. My topic is patent structures and filing process. The agenda of my presentation is IP office, patent office. Second is patenting system, patent drafting, working example, and third is benefits. Now the patent office come under the Controller General of Patent Design and Trademarks. Patent office situated in Kolkata, New Delhi, Chennai, Mumbai, and trademark registered in Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, Ahmedabad. Design means only in Kolkata. Geographical indication only in Chennai, and copyright office is New Delhi, and semiconductor device in New Delhi, and RGNIPM center training center is only in Nagpur, and intellectual property appellate board in Chennai. Now the side show the IP buildings: Kolkata office, Delhi office, Chennai office, and Mumbai office. The RGNIPM centers. The geographical location of Ministry and IP office: Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and Delhi office. If अगर मेरे पास कोई इन्वेंशन है और हम उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं,
तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इन्वेंशन कहाँ प्रोटेक्ट होगा। अगर मेरा इन्वेंशन, my invention related to the patent, then my invention is protected in patent office. If my invention related to the copyright, then my invention related protected in the copyright office. Same as design wings, patent and trade secret, trademarks and geographical indications here. अगर what is your idea? Idea need to express in writing only. अगर कोई भी आइडिया अगर होता है तो हम अगर हमारे मन में कोई आइडिया आता है तो हम उस आइडिया को राइटिंग में एक्सप्रेस करना पड़ता है, तब मेरा इन्वेंशन प्रोटेक्ट होगा। व्हाट इज, अगर मेरा आइडिया क्या, व्हाट इज योर आइडिया? इट इज जस्ट एन आइडिया ओनली, इट इज एन इनोवेटिव आइडिया and an idea been converted into an application to process your products. If yes, what is that? If not, please do not waste time. Please do not waste times, and if not, please do not waste times and convert the same to same process your product application at the earlier before anybody does it. आइडिया नीड टू एक्सप्रेस इन राइटिंग ओनली। जैसा कि आर्टिकुलर सर ने बताया है कि हमारे आइडिया को हमेशा एक आइडिया को ऐसा सोच के हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आइडिया को हम अपने को जो भी मेरा आइडिया आ रहा है उसको रिटन फॉर्म में हमको लाना और रिटन फॉर्म में लेकर के हम पेटेंट ऑफिस में फाइल करेंगे तो मेरी आइडिया, मेरे जो पेटेंट है वो प्रोटेक्ट होगा। Analyze your idea. It is a completely a novel concept. It is a modifications to existing products, device, articles, or machines. That your invention related to technical application. That is related to aesthetic creations of the existing products. Analyze your inventive idea. If your invention related to technical applications, it has been protected by patent under the patent law. If it's related to aesthetic creations of the existing product, it has been protected by the design under the design law. What is patent? A patent is an intellectual property right relating to invention and it grant to exclusive right for limiting time period provided by the government to the patentee. Patent that time period is 20 years from the date of the filing. It exchange of full disclosure of his invention for excluding other for making, using, selling, importing the patented product or process producing the product for this purpose. It is a statutory right to the invention to the application by the government for his invention, which is either a new product or process. It is grant in view of sufficient disclosure. It is granted to prevent other from doing certain act without authorization from the patentee. It is only territorial right. Basic criteria of the patent is novelty, involve inventive steps, and capable of industrial applications. What is an invention? According to Indian Patents Act, Section 2(1)(j), what is invention? Inventions means a new product or process involving inventive steps and capable of industrial application. Invention का एक मेन definition है according Indian Patent Act के अनुसार जो Section 2(1)(j) में बताता है कि हमारा पेटेंट जो है वो न्यू होना चाहिए, इन्वेंटिव होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी इसको होना चाहिए। उसमें 3 क्राइटेरिया मस्ट हो। अगर ये 3 क्राइटेरिया नहीं है तो आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। New means invention must not be published in India elsewhere in prior public knowledge or prior public use within India claimed before if any specific in India. What is new invention? A new at the date of filing the patent application. New हम अगर आज के डेट में जैसे मान लो आज 12 तारीख है, अगर हम 12 तारीख को फाइल कर रहे हैं तो 12 तारीख के डेट में हमको मेरा इन्वेंशन जो होता है वो कम्प्लीटली नॉवेल होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि न्यू इज न्यू इफ इट इज इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मींस एवरीथिंग मेड अवेलेबल टू द पब्लिक मींस बाय द रिटेन या ओरल डिस्क्लोजर डिस्क्रिप्शन
are used in any other way before date of filing of the patent application. Written disclosure means सब छोड़ देना है पता नहीं कौन सी written disclosure means in the form of paper, patent applications, also those still secret but filed before the filing date of application, internet, letters, emails, posters, abstracts, thesis. इन सबका फॉर्म में मेरा जो इन्वेंशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए. ओरल डिस्क्लोजर एक फॉर्म होता है जिसमें कि लेक्चर टू द कॉन्फ्रेंस, thesis discussion, meeting at least 2 persons, a conversion of the lectures by means radio, television, sound production, equipment, sales, etc. But do not do when the consider filing the patent applications. No publication before prior to filing. For example, no articles, press release, conference, presentation, poster, proceeding, or block entry. No sales of products incorporating the invention prior to filing. No lecture or presentation prior to filing except under the non-disclosure agreement NDA. Seek patent professional advice soon. File before other rules. Inventive steps. A feature of invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge, have economical significance or both, make the invention not obvious to person skilled in the art. अब कोई भी मेरा invention जो होता है वो person skilled in the art नहीं होना चाहिए. Inventive steps का मतलब ये है. The inventive novel and inventive steps have different criteria. The question is there, inventive steps only area if the invention is novel. Inventive step पे हम जब आएंगे जब मेरा जो invention है वो novel होगा. उसके बाद हम inventive step देखेंगे. The invention is considered to involve inventive steps are not too obvious when related to prior art. The invention would not too obvious to person skilled in art, particularly the field of technology. The term obvious means that which does not go beyond the normal process. Natural evaluations of technology, but they merely follow blindly or logically from the prior art. That is something which does not involve an exercise of the skill or ability beyond the accept of the person skilled in the art. Industrial application invention is capable of being made or used on any kind of industry. Patentable subject matter, any articles, operators, machinery or its components, any substance, whether living or non-living products, pharmaceutical products, any compositions of matter, pharmaceutical products, and any process, manner or the manufacture other essential biological process. Give you only 1 minute, please. में है लगता है What is Indian patent? What is not patent? Section 3A, inventions which is frivolous or which claim anything obvious contrary to well-established natural law. Natural law is not patentable under section 3A. Section 3B, according to section 3B, an invention, the primary or interested use in commercial explorations of which could be contrary public order or morality, which cause serious protection to human animals or plant life to health or to be injurious to public. मतलब इसका सेक्शन 3 भी ये कहता है कि हम अगर जैसे स्मोकिंग टाइप है चाहे किसी अल्कोहल ले रहा है वो जो हम जैसे एक नया टाइप का इन्वेंशन ले रहे हैं हम अपना सोच रहे हैं कि मेरा ये इन्वेंशन है क्योंकि हम स्मोकिंग कर रहे हैं जो कि सेक्शन 3 भी नॉट पेटेंटेबल है. Section 3C है mere discovery of scientific principle.
इसी टाइप का भी प्रिंसिपल जो जो हम जैसे E इक्वल टू MC स्क्वायर में भी क्वेश्चंस है और हेसेस लॉ ये जो है वो पेटेंटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू 3C. Section 3D, a mere discovery. Section 3D is very important for the chemical sector. The mere discovery of new form of known substance, which does not result in the enhancement of the known efficacy of that a known substance are in the mere use of known process, machinery operators always such known process resulting in a new product here imply at least one new reactant. For example, esters, salt, esters, ether, polymorphs, metabolic, pure forms, particle size, isomer mixtures of isomer complexes, combinations, and other derivative of known substance shall be considered to the same substance unless they differ significant property with regard to the efficacy. Section 3 is a mere admixture. This is very important for the chemical sector. According to section 3E, a substance obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the property or component thereof the process for the producing such process. Section 3, according to section 3, mere arrangement, rearrangement or duplication of known device, each functioning independently of the other any other way. Any section 3 is defined a method of agriculture and horticulture. किसी भी टाइप का जैसे एग्रीकल्चर करना और हॉर्टिकल्चर करना जो मेथड ले रहे हैं वो उस टाइप का जो अगर हम पेटेंट फाइल करते हैं तो पेटेंटेबल नहीं है क्योंकि वो सेक्शन 3 के अंदर आता है. Section 3I है. Section 3I is a method of treatment. Section 3I define a process for medicinal, surgical, curative method, prosthetic, diagnostic, therapeutic, or other treatment of human beings or animals. Treatment of animal to render them free disease to increase the economical value of their product. For example, removal of the cancer tumor, removal of the dental barrier, surgical process. जैसे अगर हम कोई सर्जरी का प्रोसेस लेते हैं, अगर हम कोई सर्जन है वो सर्जरी कर रहा है किसी चीज का और वो एक नया प्रोसेस अमेंड कर रहा है उसमें, तो वो जो है वो सेक्शन 3I के अंदर आता है जो कि हमको पेटेंटेबल नहीं है. फिर उसमें जैसे प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग टू द थेरेपी, मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब तो ये किसी पेशेंट को अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वो उसका अगर हम नया प्रोसेस ले रहे हैं मतलब नए तरीके से लगा रहे हैं तो वो भी पेटेंटेबल नहीं आता है अंडर सेक्शन 3I के. 3I a process for medicinal, surgical, curative, prosthetic, diagnostic या therapeutic treatment of human beings or animals. Section 3A is not patentable. Plants, animals in whole or any parts of their or other microorganisms, but including seed varieties and species, an essential biological process for the production and propagation of the plants and animals. अगर हम किसी प्लांट को अगर हम लेना चाहें कि हाँ ये मेरा पेटेंट है तो वो पेटेंट नहीं हो सकता है सेक्शन 3J के अकॉर्डिंग. सेक्शन 3 के a method of business, mathematical business method या computer programs or algorithm is not patentable under section 3K. इन सब चीज को हमको देखना पड़ेगा कि हम ये चीज हम फाइल ना करें क्योंकि इन सबों में रिस्ट्रिक्शन है. सेक्शन 3 लिटरेसी, डायग्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स और any other artistic creations whatever including cinematography works and television production is not patentable. अगर किसी टाइप का अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने का कोशिश कर रहे हैं चाहे हमारा वे ही अलग क्यों ना हो तो भी हम उसको पेटेंट नहीं करा सकते हैं अंडर सेक्शन 3 के अंदर. 3M का अवेयर स्कीम्स या रूल्स, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट्स, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम. अगर हम किसी को कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं उसका एक्ट अलग कर रहे हैं तो भी वो सेक्शन 3M के अकॉर्डिंग हमारा पेटेंटेबल नहीं है. Any type of presentation, way of presentations is not patentable under section 3M. Topographical indicator circuits is not patentable under section 3O. And the very important things for the traditional knowledge for biological sections,
the traditional knowledge या aggregations या duplications of known device traditional knowledge components is not patentable. Section 4 atomic energy related is not patentable. Invention falling within the scope of the section 120 of atomic energy. No patent is granted in respect of the invention relating to the atomic energy falling within the section 20 of the atomic energy 1962. According to this section, the atomic energy means energy released from the atomic nuclei as a result of any process including fission, and fusion. Under this prescribed substance means a substance including any minerals with the central government may be the notification prescribed being substance which is opening to may be used in production solute atomic energy research for update list of prescribed in Atomic Energy Act in 1962. Under the screening of this application is found to be filing within the purview of the Atomic Energy Act. The controller refers the application to the central government. The central government, upon consideration, may issue a direction to the controller, which is final. The opinion of the central government is not open as appeal. Process of patenting. Be curious, but do not disclose your invention. हम मेरा कोई नया इन्वेंशन होता है तो हमें लगता है कि हाँ मेरा ये इन्वेंशन है और हम इसको इस तरह से डिस्कस करना चाहते हैं. बट कितना भी एक्साइटमेंट हो बट मेरा इन्वेंशन जो है बिना फाइलिंग के हम किसी से डिस्कस नहीं करेंगे. Right? Why your invention is needed? What the existing products are in the market? Your new product and what is unique about your product. This is very important thing for the drafting of your patent applications for patent. Develop the idea and product model. Do not publish and disclose your invention publicly before filing the patent application. In case published, try to file the application as earlier. The act provides this period of 12 months. कुछ जर्नल से लिस्ट है. अगर हम उस जर्नल में मेरा अगर एप्लीकेशन पब्लिश है तब तो हमको 12 महीने का टाइम मिलता है. अगर उस लिस्ट से अगर उस लिस्ट में हमारा जो जर्नल है पब्लिश किया गया अगर उस लिस्ट में मेरा एप्लीकेशन जिस पब्लिश सोर्स में नहीं आता है तो हमें वो 12 महीने का ग्रेस पीरियड जो है वो नहीं मिलेगा. ये लोग तो अपने आईडी से कर रहे हैं. फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन दो टाइप के फाइलिंग हो सकते हैं वाया इलेक्ट्रॉनिकली वाया ई फाइलिंग वाया हार्ड कॉपी. इसीलिए तो बदल सकते क्या जरूरत होता है डॉक्यूमेंट कैन बी फाइल इन पेटेंट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक फाइल कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग ipindia.online.gov.in and physical filing at the office counter by the post can be submitted by the hand. This is the website of the patent office where you can file your applications and where to jurisdiction. On the basis of jurisdiction, northern state file patent application in New Delhi, southern state Chennai, western state Mumbai, rest of India in Kolkata. Foreign application based on the address of the service in India. Who can file? The applicant can file either along or jointly. अगर हम jointly करते हैं तो दोनों एग्रीमेंट होना चाहिए और दो जैसे अगर हम एप्लीकेंट दो है मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है और एक कोई और मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी का कुछ इसमें रोल है. तो हम दोनों उन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट भी होना चाहिए कि हाँ अब जितने भी फाइलिंग के खर्चा आएगा वो दोनों को 50-50 शेयर होगा और 50-50 शेयर होने के बाद जितना भी बेनिफिट होगा वो भी 50-50 दोनों में बटेगा. दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए. The filing के अगर हमारा केस अगर हमारा पेटेंट एप्लीकेशन ज्वाइन है अगर सिग्नेचर तो उसका कोई जरूरत नहीं है. The second is the inventor. कोई भी इन्वेंटर फाइल कर सकता है when any person claiming to the true and first inventor is assignee of the inventor, natural person, legal entity, company, university, etc. By any other person being assignee, a person claimed to be true or first inventor by the legal representative of the decided person to assign. अगर legal representative कर सकता है अगर हम जो applicant है वो किसी को decide करने या agent को hire करते हैं. The
डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत होता है काउंटर, तो काउंटर पे भी कर सकते हैं और ई फाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम काउंटर पे अगर हम अपने केस फाइल करने जा रहे हैं तो हमको एक कवरिंग लेटर चाहिए, न्यूली फाइल एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन फाइलिंग फॉर्म से डुप्लीकेट, proof of right to application in which there is not applicant, prescribed fee as per the first schedule of the class of the draft patent specification दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोविजनल भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं, और उनको फॉर्म 2 मिलेंगे। और डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन इन फॉर्म 5, एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग पावर ऑफ अटॉर्नी इन एप्लीकेबल सिंगल कॉपी। स्टेप क्या हो सकते हैं? स्टेप फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द ग्रांट ऑफ पेटेंट। First of all, we can filing the patent application provisional या complete. After 18 months, it has been published under section 11A. Then request for examination फॉर्मेलिटी फाइल करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेटेंट ऑफिस में केस जो होता है वो एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद वो कंट्रोलर को भेजता है। कंट्रोलर क्या करेगा कि वो उसमें अगर ऑब्जेक्शन है तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के रूप में वो एप्लीकेंट को ऑब्जेक्शन भेजेगा, और फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जैसे इशू होगा उस डेट से हमको 6 महीने के अंदर हमको उसका IPR का रिस्पॉन्स पेटेंट ऑफिस में फाइल करना होगा। अगर हम 6 महीने के अंदर अगर पेटेंट ऑफिस में रिपोर्ट नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो मेरा केस जो है ना वहीं पे रिफ्यूज हो जाएगा। अगर मेरा केस जो है अगर 6 महीने के अंदर रिप्लाई फाइल कर दिया, अगर केस जो है मेरा सेटिस्फैक्टरी अगर हम रिप्लाई फाइल किए हैं तो हमारा केस ग्रांट होगा। अगर हम केस जो है सेटिस्फैक्टरी मेरा एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं गया है तो हमें हियरिंग लेटर इशू होगा। हियरिंग लेटर में ये डेट और वाया वीडियो भी हो सकता है, वाया फिजिकल भी हो सकता है। तो अगर हम वीडियो चाहे वाया फिजिकल हियरिंग अटेंड कर रहे हैं और उसमें डेट और टाइम डिसाइड होता है, अगर उसमें हम सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे रहे हैं कंट्रोलर को तो उसमें 15 दिन के अंदर हमको हियरिंग डेट के 15 दिन के अंदर हमको रिटर्न फॉर्म में उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर मेरा केस हियरिंग के बाद अगर 15 दिन के अंदर रिप्लाई फाइल कर दिए हैं, अगर तो मेरा रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, अदरवाइज माय केस विल बी रिजेक्टेड। देन अगर मेरा ग्रांट होता है तो लेटर पेटेंट इशू होगा विद इन 1 वीक। अगर विद इन 1 ईयर कोई भी अपोजिशन पार्टी थर्ड पार्टी जो है वो अपोजिशन फाइल कर सकता है। 1 साल के बाद कोई 1 साल का टाइम होता है, 1 साल के बाद कोई अपोजिशन फाइल नहीं कर सकता। फीस प्रोविजनल और कंप्लीट के लिए इंडिविजुअल 1600 है और कंपनी के लिए 8000 है। अगर हम ई फाइलिंग करते हैं तो 10% लेस होता है। अगर हम हार्ड कॉपी फाइल करेंगे तो 8800 लगेगा। अगर हम ई फाइलिंग करते हैं तो 8000 लगता है। इस तरह अगर हम पेज एक्सीड करते हैं 30 पेज के अंदर हमको 8000 की लगता है। अगर हम 30 पेज के अलावा अगर मेरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्लेम सब होने के 30 पेज के अलावा अगर जाता है तो पर पेज हमको 800 रुपए देना होगा। अगर कंपनी फाइल करती है तो इंडिविजुअल करते हैं तो 160 रुपए देना होता है। इस तरह क्लेम का होता है। अगर हम 10 क्लेम करते हैं तो हम 10 क्लेम 8000 हो जाता है। अगर हम 10 क्लेम के अलावा फाइल करते हैं जैसे 11, 12, 11, 12, 13 करते हैं तो हमको 1600 रुपए लगता है। और इस तरह इंडिविजुअल को पर क्लेम 320 रुपए लगता है। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अगर हम लेते हैं तो 480 रुपए पर मंथ लगेगा, और इस तरह कंपनी का लगाएंगे तो 24 रुपए पर मंथ लगेगा। रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन के लिए फॉर्म 9 फाइल करते हैं, उसके लिए 2500 लगेगा, और कंपनी जो है 12500 लगती है कंपनी का। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है 4000, अगर कंपनी है तो 20000। रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेस रिक्वेस्ट करना है 28000 और इंडिविजुअल है तो 5600 और वो परमिटिंग। Obtaining a patent, filing an application for patent information, consider application for the detail ipindia.in. This is website, the patent office. Publication, application is kept secret for the period of 18 months from the date of filing. Application has an options to get application published before 18 months. Gazette notification has Friday को ये gazette notification आपका publish होता है। फॉर्मेलिटी चेक करते हैं
जब केस हमारा फाइल हुआ और एग्जामिनर के पास गया तो हमारा केस जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर एग्जामिन करता है कि उसमें क्या क्या फॉर्मल रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट। टेक्निकल दोनों अगर फुलफिल नहीं हुआ तो ऑब्जेक्शन जाएगा। Application examiner on request. Application sent to the examiner with 1 month from the date of request of examination. FER and this is FER on the issue of the patent application. Response from the applicant. Within 6 months from the time from the date of issue of the FER is available to the applicant to make the objection. If objection are made, grant the patent is approval to by the controller within a period of 1 month. Grant of patent is a certificate of the patent is issued within 7 days. Grant of patent is published in the official journal. Patent drafting is this is very important for the patent drafting. First of all, abstract, drawing, claim, disclosure of embodiment, and introduction. Kind of patent application, there are two types of application: provisional and complete application. Provisional applications secure the priority date. अगर हमारे मन में कोई इन्वेंशन आ रहा है और मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एप्लीकेशन को एज ए प्रोविजनल फाइल कर देंगे। प्रोविजनल फाइल करने से हमारी डेट जो है वो मेरी प्रायोरिटी डेट जो है सिक्योर हो जाती है और उसके बाद हम अपना केस पब्लिश कर सकते हैं एज ए पेपर, any form of publications वो पब्लिश कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। बट प्रोविजन होने के एक साल के बाद हमको कंप्लीट फाइल करना होता है, उसमें भी हमको उसमें क्लेम और एग्जाम्पल सब देना होता है। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का फायदा यही है कि हम मेरा इन्वेंशन अगर कंप्लीट नहीं है तो हम प्रायोरिटी डेट देने के लिए हम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं और इसका फीस भी उतना ही होता है, 8000 होता है। जब हम कंप्लीट फाइल करेंगे तो हमको उस समय फीस नहीं देना होगा क्योंकि हम एक इनिशियल टाइम पे प्रोविजनल के टाइम दे चुके हैं। अगर हम मेरा उस टाइम अगर हम 30 पेज के बाहर एक्सटेंड होता है 31, 32, 33 व्हाटएवर जो भी हो और क्लेम जो 1 to 10 के बियॉन्ड जाता है तो हमको एक्स्ट्रा फीस पे करना होता है। उसको बोलते हैं CAP, कंप्लीट आफ्टर प्रोविजन। The provisional specification secure the priority date may be filed as soon as the patentable idea comes into the mind and disclose essential features of the invention. Time limit of complete specification is 12 months. Explore commercial feasibility, avoid the further expression in commercial feasibility, and page exceed 30 including drawing sheets are chargeable 160, 400, 800 per week. Second is complete specification. The most important thing in complete specification, page 1. The page 1 is title of the invention, name, address, nationality of applicant, and preamble. And page 2, field of invention, background of the invention, prior art, advantage over the prior art, summary of the invention, statement of the invention, detailed description of the invention, and working example, and then claim, then drawing, and abstract. Content of the patent writing, title, field of invention. जो हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेंगे उसको इस क्राइटेरिया में फुलफिल करेंगे। फर्स्ट हम टाइटल करेंगे, फिर फील्ड ऑफ इन्वेंशन, फिर बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेंशन, देन समरी ऑफ द इन्वेंशन, देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग, डिटेल डिस्क्रिप्शंस, क्लेम, फिगर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर मेरा जैसे क्लेम किसी कंपाउंड पे है तो कंपाउंड का हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का डाटा हमको उसमें एग्जांपल में या डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन में हमको देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास ट्रेडिंग ऑब्जेक्शन फाइल। Title. The title of the invention shall disclose the specific feature of the invention. Title should not disclose exceed 15 words. 15 शब्दों से ज्यादा हमारा टाइटल नहीं होना चाहिए और टाइटल जो होता है वो हमारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का जिस्ट होना चाहिए। Field of the invention is due invention. The description should be fairly being with a general statement of the invention so as the indicate brief the subject matter to which the invention related. For example, invention related to
Thereafter, the advantage of the invention may be mentioned to bring out clearly the area application preferably use the invention. The application may be substance industrial applications or the invention in the art. State of the art prior art. अगर हमारा कोई इन्वेंशन है, किसी भी अगर कोई हम कंपाउंड बना रहे हैं तो उसका प्रायर आर्ट कुछ ना कुछ तो होता ही है। उससे मेरा इन्वेंशन जो होता है उसके कंपैरिजन में हमारे जो कंपाउंड जो बने हैं उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होना चाहिए, मतलब एडवांसमेंट होना चाहिए प्रायर आर्ट के। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो प्रोवाइड पर्पज ऑफ द इन्वेंशन है। मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एसेंशियल एस्पेक्ट होता है परफॉर्म ऑब्टेनिंग एस्पेक्ट अकॉर्डिंग होना चाहिए। समरी ऑफ द इन्वेंशन, जो हम अपना डिस्क्लोजर दे रहे हैं, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में एक समरी होनी चाहिए। उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर सफिशिएंट डिटेल होना चाहिए, डिटेल ऑफ इन्वेंशन होना चाहिए, रेफरेंस टू द ड्राइंग होना चाहिए। अगर मेरा ये क्या नाम है मैकेनिकल है या डिवाइस से रिलेटेड है तो हमारी ड्राइंग जो होनी चाहिए उसमें। अगर केमिकल है उसमें भी अगर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अगर केमिकल फार्मूला दे रहे हैं तो वो भी एक क्लियरली फॉर्म में होना चाहिए, क्लियरली इंटेलेक्चुअल लीगल अबाउट द इन्वेंशन। और जो हमारा जो सेंटेंस है वो क्लियर होना चाहिए। Main component of description है clear and intelligent language about the invention, disclose the manner in which invention is to be performed clearly and precisely, scope of the invention, define the various necessary performance optional feature to limit the not exceed the monopoly। अगर मेरा जो पहला जो क्लेम प्रिंसिपल क्लेम है वो क्या होना चाहिए कि उसमें अगर हम कोई प्रोसेस ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस पैरामीटर पूरा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और वो एक सेंटेंस में होना चाहिए और इसमें कंपैरिजन और एक्सेट्रा अबाउट दैट ये टाइप का वर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। डिटेल डिस्कशन बायोलॉजिकल मटेरियल्स है, सोर्स जियोग्राफिकल ओरिजिन्स है। अगर जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो हमको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पे डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर हम कोई सीड ले रहे हैं या कोई हम ऑयल ले रहे हैं तो वो कहाँ से और किस मार्केट से लिए हैं उसको उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो ये एनबीए ऑब्जेक्शन में आता है। सोर्स और जियोग्राफिकल ओरिजिन इसी तरह अगर हम जियोग्राफिकल ले रहे हैं जैसे किसी कोई बनाना का ले लिए चाहे ऑयल लिया नारियल का लिए चाहे ऐसे करके तो उसको जहाँ से भी लिया है किस मार्केट से लिया है चाहे जिस जंगल से लिया है जिस जहाँ से भी लिया है उसका एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन में हमको देना पड़ेगा। क्लेम क्या है? क्लेम जो फर्स्ट क्लेम जो होता है पहले बेस्ड ऑन द मैटर डिस्क्लोज ऑन द स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल क्लेम होना चाहिए, प्रीफर्ड एम्बॉडीमेंट। उसके जो प्रिंसिपल क्लेम है उसके जो सब जितने और पैरामीटर होते हैं उसको प्रीफर्ड एम्बॉडीमेंट बोलते हैं जो उनके क्लेम में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लेम शुड बी डिफाइन as essential features, novel features, original features may be given the subordinate claims. Claim should be requirement under section 2(1)(j), 3, 4 and 10। क्योंकि मैंने बताया है कि 2(1)(j) के अकॉर्डिंग जो पेटेंटेबल नहीं है वो उस क्लेम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। क्लेम में भी नंबर होना चाहिए, नंबरिंग उसकी क्लियर होना चाहिए। अगर नंबर है 1 और उसके सब नंबर ए बी सी अगर उसमें प्रोसेस पैरामीटर है तो वो भी अकॉर्डिंगली सबको ए बी सी करके क्लियर करके उसमें दिखाना पड़ेगा। और जो डिपेंडेंट क्लेम है वो एज क्लेम इन क्लेम 1 एज क्लेम इन क्लेम 2 करके उसको दिखा देना पड़ेगा सेकंड पार्ट को 10 तक क्लेम कर। अगर क्लेम 10 तक है तो क्लियर एंड कॉन्शियस होना चाहिए रिलेटेड टू सिंगल इन्वेंटरी कॉन्सेप्ट इन्वेंट हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट सेक्शन 10(5) क्लेम जो होता है वो हमको सिंगल इन्वेंटरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम ए भी क्लेम कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं, डी भी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई अगर मान लीजिए अल्कोहल हम ले रहे हैं, एथाइल अल्कोहल ले रहे हैं तो उसका स्टेट ए बी सी इसी में होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रोपेनॉल एथेनॉल भी लेने लगे, ऐसा नहीं है। रिलेटेड टू सिंगल इन्वेंशन एंड सिंगल इन्वेंटरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि 10(5) में आता है। सिंगल सेंटेंस में होना चाहिए क्लेम एक्सीडिंग 10 feet चार्जेबल पर क्लेम। Excuse me, ma'am. Just actually we are already running late, so kindly just summarize it again. Okay. हाँ ठीक।
important to give me only 2 to 3 minutes. Okay? Hello, ma'am? Hello? 2-3 मिनट आप मुझे दीजिए जो कि मैं इसका बेनिफिट The benefit of the patent is the stop reinvention from what is already patented, patent collaboration, money, fame, name. हमें क्या चाहिए? एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए? एक कोलैबोरेशन, मनी चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए. इससे और इस क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है अगर हमारे इन्वेंशन का तो हमारा जो है मोरल भी हाई होता है. बेनिफिट है इसके. और इसका है it does not patent give you right to the take legal actions under civil law to try to stop them exploiting your inventions. And shall the patent also allow you to sell the invention and all intellectual property right, license the inventions to someone else related to all IP rights, discuss the invention with other in order to stop the business based around the invention. हमें क्या करता है कि हमको एक लीगल राइट देता है फ्रॉम द 20 ईयर के लिए कि हम अपना आईपी को अपना प्रोटेक्ट कर सके, उसको सेल्स कर सके, उससे मनी प्राप्त कर सके, उसे फेम दे सके. ये हमारी बेनिफिट है. अगर हम अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इफ योर इन्वेंशन डू नॉट पेटेंट योर इन्वेंशन एनीवन कैन यूज मेक और सेल योर इन्वेंशन एंड यू कैन नॉट स्टॉप देम. कोई भी आपका इन्वेंशन चुरा लेगा और आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे. थैंक यू. Thank you, ma'am, for your informative lecture. Now participants are requested to ask their queries through chat box as we are running behind the schedule. Thank you once again, ma'am. Okay, thank you, ma'am. The last lecture of this session is by our eminent speaker, Dr. Amit Dubey, scientist C-Cost Raipur, CG. And for his brief introduction, I would like to invite Dr. Bharat Sahu, Assistant Professor, Department of Chemistry, GGD. Thank you so much, Madam, for giving me an opportunity to introduce our next speaker. A very good afternoon, galaxy of intellectuals, invited guests, scientists, professors, students, participants, ladies and gentlemen. It is a matter of immense pride to stand here before all of you this afternoon. On behalf of Department of Chemistry and my own behalf, I am delighted to offer a gracious welcome to our next speaker, Dr. Amit Dubey sir. Sir has been working as a scientist in Chhattisgarh Council of Science and Technology, C-Cost. Apart from this, Dubey sir is also having some extra scientific responsibilities like he is in charge of Central Laboratory Facilities and Intellectual Property Rights Center. Sir did his PhD in biotechnology subject. Moreover, sir is an expert in various fields such as biofertilizers, fermentation technologies, phytochemicals, mushroom, tissue cultures, environmental studies, etc. Dubey sir published more than 25 papers in various reputed journals. Later on, sir has also got many prestigious awards from different organizations. So now I would like to call upon Dr. Amit Dubey sir to present his lecture, and his lecture title is Role of Chhattisgarh Council of SNT, Department of SNT, Government of Chhattisgarh, IPR addressation and IP ecosystem development in the state. Please, sir. Thank you for welcome. Thank you for inviting me, and thank you for the nice introduction. Honorable Vice Chancellor, Registrar Sir, Honorable Bajpayee Sir, who has been sort of a mentor to us for quite some time, and also has been the coordinator of council activities with you since long time. So, am I allowed to share the presentation, and am I audible? Yes, sir. You are audible. So the lecture is basically role of. Could you please mute your mobile because I am hearing a lot of backdrop. The role of Department of Science and Technology in IPR awareness, addressal and development of ecosystem in the state of Chhattisgarh. So
So let me start with. Could you please kindly switch off your mobile voice so that. Yes, sir. Thank you. So, let me start with what is council and how council is working in the field of IPR awareness and IPR, ecosystem development in the state. So initially, with the brief about council was established in 2001 under the aegis of Department of Science and Technology, Higher Education and Manpower Planning. Right now, the council premises spread over 4 acres and 10 acres of regional science center and totaling to 40 acres premises in the heart of Raipur. The mandate of council is to develop scientific temper, capacity building, intellectual inquiry, and keen observation among people, to establish and assess development of infrastructure, to advise on policies, measures necessary for promotion and utilization of S&T, especially for the socio-economic development, to set up, administer documentation centers and laboratories, to assist in preparation of science and technology plans, etc., etc. You are well aware of council schemes like R&D promotional activities, in which we grant mini research projects, conference symposia grants, travel grant, as well as publication grants. Earlier, GGU has been publishing a journal of science and technology with the support of council. So it has been long associated in these endeavors. CLF facility is also being utilized by several research scholars in the state. This IPR center is underutilized, but yes, still it is utilized. We have filed in more than 5-7 patents for GGU, out of which one I remember has been granted for Department of Pharmacy, also for a compound which was anti-diabetic. So let me straight away go to what is the importance of IPR these days and why it has become so much, why there is so much fuss about IPR. It has become crucial because it is based on principle of natural justice. Creator has the right to economic rewards. Creator has the right to control and use of its innovation. And in a nutshell, what IPR does is basically it evolves society, economy, and technology. Last but not the least, there should be a transparent system, and IPR provides that transparent system, which actually is the need of the hour. And a transparent system by means I can say that if in case I am the innovator, I have the legal right for filing a patent. If I am the inventor, then the creation should be controlled by me, and that is what is basically a transparent system all about. So my previous speakers have already spoken about the scope of IPR, but this is in a nutshell the scope of IPR. It actually enhances the company value or the institution's value. The more the number of patents, like MIT, like these institutions, these institutions are recognized worldwide because of their technology developed, because of their patent, because of their IPR, and so on and so forth. It ease out the entry barriers. If you want to do business somewhere in other countries, so the patent right which you have reduces your entry barriers. Avoid free riding. Nobody else can use your invention. It gives you a legal monopoly, financial leveraging. Obviously, you can sell, lease, license your IP. Avoid infringement. You always have a right to go to the court of law for if there is an infringement on your patent and so on and so forth. Counterfeiting, it reduces counterfeiting, so the services which is actually given to the society is original and authentic. Economic and societal development. So in a nutshell, there can be different views, but presently IPR is the most important factor in global economic scenario. Before embarking into what council does, let us, because there has been talks about patent, copyright, and other aspects of IPR, the procedure of patent filing. Let's start, because we means me myself and GGU also is an academic institution, academic and research institution. So what innovation is all about? Innovation is basically developing a new idea and putting it into practice.
That is what, in a nutshell, innovation is. It can be innovation incremental, it can be, disruptive, it can be some advancement to the recent technology which is already available, it can be some economic efficiency, increasing economic efficiency of a technology, and so on and so forth. So competitivity of an institution or market is driven by business environment, and it entails two important things: bringing valuable new products or services to the market, and to meet the explicit or implied need of the current or potential customers. If we see 20-25 years back, we never have thought of that every pocket would have a mobile phone, and see that what this technology has brought along with it. Online classes to this and that, everything. It has changed the entire panorama on this planet Earth. This is how it has happened. The technology can bring out a sea change in the society. So through innovation, an enterprise or institution seeks to deliver new values. So technology innovations can be a product or a process. It can be radical or incremental. It can be disruptive or sustaining. There are other innovations also, like marketing innovations. There are new types of marketing strategies. Earlier, we have seen the chain method of marketing, then advertisements, and then advertisements have got different forms. Then there can be institutional innovations also, that changing the system in the institution, making it more, ease of doing business, and so on and so forth. These are basically institutional innovations, complementary innovations. So innovation is basically key for addressing them in form of IPR. We have to start with innovation and then addressal of IPR. To first, this concept of innovative approach towards projects, like what the first speaker, the Controller General said, you have to look into the patent database also before embarking into the research project. If you see that, you will be able to analyze what patents have already been granted in that area of or the domain in which you are intending to work. If that you see, so you will obviously go ahead than that, rather than doing the same again, reinventing the wheel, and so on and so forth. So conception of what amount to property has significantly changed these days. We are now moving towards non-tangible assets as compared to tangible assets. Knowledge-based economy is basically the talk of the tinsel town these days. It dictates the ideas and concept have become more important as compared to the tangible assets. In the knowledge-oriented economy, universities and research institutions have to play key and dynamic role. And these institutions would be, sort of the breeding grounds of innovation. And from there, all the IP should originate, and we intend to do so. So this is what is the innovation process. Research, primarily done by R&D universities, institutions, industries, and other such organizations. Innovations, then development of the product, IP addressal and approval, production, marketing, and adoption. This is basically in entirety the innovation process is all about. From research to market and adoption of that technology in the society as well as to the general masses. So that adaptation of technology from research is holistically represents the entire innovation process. And to encourage innovation, let me state that there is no such technology in the world which is same as such, and it is used in a same manner all the way around. Because if we talk about agriculture sector in US, there are large farms, big farmyard machineries. And if we talk about India or countries like India, there are small and marginal holdings with the farmers, and we need farmyard machinery to adapt to this situation rather than that. So there is always scope for innovation.
There is rarely a technology which is adapted all over the world in a same manner. So there is always scope of innovation in the technology. Even we can use the same technology and further either we can make it efficient or make it adaptable with the technical inputs or the research inputs according to our local specific need, and then also can file a IP, then also can file a intellectual property associated with that. If it is a product or process, go for a patent. If it is a sort of a literary matter or a research paper or a publication, go for copyright. If it is basically a design, go for a design. If it is a layout circuit, go for layout circuit, and so on and so forth. So this is how technology basically is not same all over the world. So always there is a scope for innovation as per the socio-economic, climatic, and ecological conditions. So innovations primarily are induced. The first and foremost thing which is required is basically assess the need and assess the socio-economic condition, and in accordance assess the need of what is required. रुको करना पड़ेगा एक मिनट just hold on for a second sir because I think No problem, sir. can you hear me? Yes, sir. You're audible, sir. Can you hear me? Yes, Yes, sir. You're absolutely all the technologies or all the innovation. Okay. All the innovations basically are induced, like labor shortage led to mechanized equipment, drought conditions led to improved irrigation, energy crisis led to high efficiency automobile or high efficiency cars, and so on and so forth. Farmers cooperative, which we know in India as Amul, was established during the period of excessive low farm prices. So, before embarking into any research proposal or any research work in any domain per se, the requirement is basically to go through the patent database first and foremost, and secondly to analyze what is the need of the hour, what basically is needed, what are the economic conditions which are needed, which are presently in India, and according to that we have to go for a research. So that would always lead to a innovation, and then lead to finally an IP, intellectual property. So this is one of the example wherein this technology has been used in the same pliers only, and patent have been granted year after year. Like in US patent was granted in 1970, 1981, 1990, 2000, and again 2000 and 2010, and so on and so forth. So these are all pliers. We know pliers basically for opening nuts, for holding, pulling, and this and that. But these are all pliers, and patents have been granted to them. So, by this, I want to qualify that, there is no dearth of requirement, and there is no dearth of potential for innovation. It is need which you have to analyze and then embark into a research proposal, and you will always end up with an innovation, and you will always end up with a IP at your hand. So what needed is basically a creative transformation, searching for innovation requirement and change demand, monitoring technology change, change, transforming performance. These are the key spaces which are primarily required in any or research, so that always and project or research with or innovative sector. This I policy is also favorable and लेकिन लास्ट में क्या है कंक्लूडिंग रिमार्क it is बाय डॉक्टर आरती से बात करें ना दिखाइए तो कहां है रिपोर्ट
Our policy as Innovative India, schemes like Innovative India, make digital. These they are important aspects. Sir, your voice is not coming. It's still breaking, sir. Okay, clear. So, Sir, is it coming now? yeah, now it's fine, sir. Now is it okay? Yes, it's okay, sir. Okay. So these are basically the technologies which are, this IPR policy is basically very conducive to the present ecosystem and the present condition of innovations in the state, wherein the promotion of that and even the subsidy associated with it and the facility associated with it are very very pro to the innovator. So what council does? So in a nutshell, what patent or specifically patent require is basically grant from innovation to patentability aspect search, then legal and need of lawyers, and the grant of the patent and any IP per se. This is one example I chose because patent is the talk primarily these days. So I chose an example of patent. So from innovation to grant, this is what is basically required for an IP addressal. So what council does in that, or what Department of Science and Technology, Government of Chhattisgarh does in that? What we do is basically we provide search facility for the innovators through patent database and online search. Earlier speaker have already told you about the free databases like Google, eSpace, WIPO patent database, and so on and so forth. We apart from that, we also have a subscription of database which is also used by offices all over India. So that is basically a subscription which we have, and we can generate even graph and inclination and even the future aspects of technology, where the technology is going on, in which direction it is propagating, and so on and so forth. So that search facility is provided free of cost counts to all the innovators. Even if before going into a research project, if you come to us and ask for ask for a search or database search, we'll provide you that search in the stipulated time so that you can use that search in your research proposal as well. We help the innovator find the technical aspect of innovation which he has done. Means several of the innovators, like for example, individual innovators who come to us, they know that there is an innovation in it, but which is the technical aspect associated with that innovation, they don't know. Like for example, a fellow comes to us, for example, and say, I have developed a brake cycle which basically a oil brake, and it can be used in the mountain areas as well, with very low pressure applied to the brake, and the cycle would stop. So that he comes to us and says, "Meri cycle patent kara dijiye." So the cycle is not patentable in there. The brake and the inventive step is basically in that brake, because cycle is already known, even the oil brake is already known, but oil brake used in cycle, wherein earlier the friction brakes were used for proper braking of cycle in especially hilly region, is the inventive step which is done there, and that basically is the technical aspect of that innovation. So
the bid would on the braking system for a cycle, especially a mountain cycle, with ease of braking. So this is the technical aspect. We also help the innovator find technical aspect of innovation. We do it two parts. One is institutional patent, which is entirely free of cost. It is Department of Science and Technology, Government of India is so secondly, will also equal patents wherein I agreement with us or either also want on as well. We do help better technical as also patent. That we also have a single counter for IP address in the state, recognized by state industry department as well. We are fighting startups by the MSMEs. So this is in a nutshell what council does. Application with that. What council needs for this is application with abstract of innovation, discussion with the innovation innovator is required to understand innovation, and the right embodiment so as to facilitate proper drafting of that innovation. This is what council needs. So many a times we discuss three things with the innovator for going to that drafting to understand his innovation. On the basis of the application, research has been carried out and the details also provided to the innovator. Institutional patent are routed and technology like from so also created at India level we transferred technology to UK-based company and is implemented innovation patent has been granted on that technical domain. So council does basically from dealing search from finding the innovative aspect of the innovation to search and then filing and then also technology transfer. So we almost cover all the aspects of IP addressal. Sir, yes, your voice is not clear, so it's better you can just shut down your video, mute your camera. Okay. Just hold on for. Yes, sir. Let's save the bandwidth. That is what you are saying, isn't it? Yes. Now is it fine? Yes, sir. Now it's fine. So we have four aspects, four sections in council patent information center, which is supported by Department of Science and Technology. We also address grassroots innovation we have grassroots innovations also through our Gyan cell, which is supported by National Innovation Foundation, Ahmedabad. We have an innovation fund program, which I would talk about detail, and intellectual property facilitation center for MSME in Chhattisgarh. So these four wings are basically working because I am talking to this August gathering and researchers and professors from GGU. So apart from mini research project, we also grant innovation fund, which is basically for prototype development for your innovative idea. Or under this, we supported Shyamrao Shirke and he got a patent on that. And the technology has been transferred to RedCat India Group. The format is also available on the council's website. Under Innovation Fund program, we actually provide mentorship. We provide also the laboratory facility through the network of institutions through which we have MOU with. We also provide technology transfer and IP addressal through Innovation Fund. So all the four aspects which are necessary for IP addressal or IP facilitation, we address through Innovation Fund as well. We also provide financials for prototype development, address of IP, technology transfer, mentor,
and laboratory facility through Innovation Fund Program. We also funded innovation through innovation. We funded a fellow from Durg who actually developed an opter 2-in-1 bike for clearing water essence from surface water bodies. And that technology is right now being utilized by the Forest Department Durg, and they are using his bike for cleaning of water bodies in forest areas. That bike has few attachments, and then it can go into the water and then pull out water essence. So that technology also we funded. So this innovation fund can be used by academicians in DGU, and can also develop innovative products and processes and so on and so forth. So we facilitate search, drafting, filing of IP. We facilitate innovators in individual as well as institutional. We facilitate micro, small and medium enterprises, startup and industries, and also grassroots innovators of the state. So apart from this, to develop an ecosystem, there was need of a policy frame, because with policy frame, the ecosystem doesn't develop. So what we did was we formulated an institutional IPR policy with the help of a few agencies like Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, and also Department of Science and Technology, TIFAC, Technology Information Forecasting Assessment Council. That draft institutional IP policy was circulated to all the leading universities, including Guru Ghasidas University as well. There were representatives meeting, brainstorming session organized for these IP policies, so that institution can adapt or reframe that IPR policy, institutional IPR policies according to their own needs. The IP policies covered all aspects of IP addressal. Means, like for example, a project is granted to a person from Council of Science and Technology in GGU, and then he comes up with an innovation. Who would be the applicant? Who would be the inventor? How it would be addressed? If there is a dispute, how it would be resolved, and so on and so forth. Every aspect of that was covered in that institutional IPR policy. Then we also formulated an institutional IP guidelines, which was circulated to almost all the universities and leading colleges in the state. So with this, we enable an IP frame in the institution. And like IPR cells have also been set up. Most of the cells, I am a member in that. Like I am a member in Ravi Shankar Shukla University and several others. Even in GGU, I am a member. So this is what we did for the ecosystem development in the state. IP policies, I have already told you, covered the scope and issues of person covered, ownership of IP, processes and operationalization of that IP, transfer, commercialization and of the IP aspect, how the benefit sharing between the applicant and the innovator would be done, how it would be enforced, and dispute settlement. These all things were covered in the institutional IPR policy. So to sum up what the role council is playing, we play as an advisory role on all issues relating to IP, responsible for IP policy frame in the state, negotiating, licensing out and licensing in IP asset, that is technology transfer and so on and so forth, creating linkages between research and IPO, taking all necessary timely action to protect IP interest of the institution, filing of IP or patent applications, conducting institutional IP audits also we do, reviewing of research collaborative arrangement, IP awareness programs, and partnership with potential users of various research results. So this is from innovation to the technology to the grassroots level. We are facilitating through our IPR center. What our objective is, the public and universities and research outputs go with the IP facilitation to the industry and investors, and from there the public and government can utilize it. So this is what basically our mandate in Intellectual Property Rights Center is. Whatever research outputs are coming from universities go first to for IP facilitation, then to the industry through technology transfer and others, and then can be later on utilized by public as well as the government.
So this is what we intend to do, and the needs presently. The need for R&D to take a proactive role in adopting an IP agenda, linking with IPR centers in the state like us, commit to IP audit, strategy, policy, and IP cell, develop partnerships, as much as possible collaborative research. So goals expected and the outcome which we intend with these all endeavors which we are doing is IP policy formulation at each partner university or institution, creation of defined IP infrastructure at each partner university, raise awareness on IP matter to the academic staff, students, as well as masses, establishment of IP best practices. This would not only result in more innovation, but also better publications as well. Increase research collaboration between partner and other R&D institutions, and the trickle-down benefits are to the researchers, to the university, funding agency, general public, and finally the government. So this is what is overall what we expect with the endeavors, with the efforts which we are doing through Intellectual Property Rights Center. So R&D operate in a fast-changing and complex business environment. The need of the hour is we have to adapt to that. If we don't, then we would be definitely excluded. Because one principle I think is applicable everywhere in the world is the survival of the fittest. Property relations are being redefined, and it is those with ideas that are set to rule the world. If we have better ideas, better innovations, obviously we will be ruling the world. In order to develop a self-sustaining circle of research and innovation, IP is an indispensable agenda. You cannot ignore IP if you want to develop a self-sustaining circle of research and innovation. So this is what I council does, and this is what we intend, and this is what we propose the outcome of it. Thank you for the opportunity to speak in front of this already happening. Thank you. नीचे से आ रहा है यूट्यूब पे भी। Thank you so much, sir, for providing such a great knowledge, great information related with the IPR, and you have covered almost all aspects of IPR, and hope everybody got benefited from your lecture. So as we know that we are running late, so I am going to request all participants, if you have any query, then you may ask to sir directly. We can have only one or two questions. Dear participants, if you have any query, any question, any doubt, please you may ask. Otherwise, we will continue. So, thank you so much, sir, once again for giving us a very precious time, and it was really nice lecture. And now I'm going to hand over the mic to Manorama madam for further proceeding. Thank you so much. Thank you, Dr. Bharat. In the continuation of this program, I just would like to invite organizing secretary of this webinar, Dr. Ashish Shrivastava, Assistant Professor, Department of Chemistry, for the reporting of the webinar. Madam. Thank you, ma'am, for inviting me to submit the report of the webinar. So, first of all, very good afternoon to all the dignitaries, faculty members, and all the participants. And in our webinar, we have today with us the Honorable Chief Guest Professor Alok Kumar Chakraval, sir, Honorable Vice Chancellor Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, and eminent speakers Mohammad Atiqullah, Assistant Controller, Patent and Design, Patent Office, New Delhi, Dr. Seema, scientist,
IP unit, CSIR, and Dr. Amit Dubey sir, scientist D from the CCAS, Raipur. So, our Honorable Vice Chancellor has given the idea that we have to file the patents, and the number of the patents we have to increase from our university. And after the inaugural session, the technical session has been completed with the 3 lectures on the different topics related to the IPR awareness among the students and the faculty members, delivered by our eminent speakers from the different reputed institutions. In this regarding, the Mr. Muhammad Atikullah has delivered the talk on particularly the IPR awareness under the NIPAM IPR awareness mission to meet the Atmanirbhar Bharat on occasion of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. He discussed about the IPR structure and then the patent filing aspects in a brief and some legal requirements for filing of the patent. After that, Dr. Seema has talked on the patent structure and filing procedure. She speak about the first of all patent inventions and then the complete description of the patent filing as per the Patent Act law. After that, Dr. Amit Dubey sir has focused on the topic role of the Chhattisgarh Council of Science and Technology Government of Chhattisgarh in IPR addressal and IP ecosystem development in the state. Sir has discussed about the first innovations and the IPR. He has also given so many IPR centers which are working on this, and he also aware the participants with the facilities to provide the patenting from the IPR cell of the city cost. So, after the technical session, I would like to share some information like about more than 200 participants are registered in this webinar, and out of the 200 participants, about the 100 participants have joined the webinar through the YouTube link and the Google Meet link. So, and the participants were registered from the different states and the different reputed institutions. So the session was the very good. So completely, it was a thoroughly enlightening and the informative sessions. So this is the report of the very brief webinar. So thank you so much. Now I request to the Dr. Manohar to continue this. And thank you, madam. At the last of this session, I would like to Dr. V.K. Rai, Assistant Professor, Department of Chemistry, for the vote of thanks. Thank you, madam. Good afternoon to one and all. So after successful completion of this webinar, on behalf of the Department of Chemistry and on my own behalf, I would like to thank first of all our eminent speakers, Mr. Atikullah, Dr. Seema, and Dr. Amit Dubey for their valuable knowledge sharing and information to the audience in a very systematic and contentful manner. And I hope your consistent support in future to make this event successful and practical ground reality will be available from time to time. Thank you once again. Then I extend my sincere thanks to Professor Alok Chakrawal, Honorable Vice Chancellor, for his gracious presence and contentful guidance for us towards achieving new targets in the area of IPR by the teaching fraternity of GGV. I also extend my thanks to the Registrar, Professor Shailen Kumar, for his continuous support for successful conduction of this program. I must thank to Professor P.K. Vajpayee for his address and relevant information along with his kind support and presence and inspiring all of us to make this event successful. Although the Department of Chemistry is organizing and hosting this event, I must appreciate and extend my sincere thanks to our head, Professor G.K. Patra, who has been the main pillar from behind the curtain to achieve this success. He is ready to help nature and support really help to make this event successful
in reality from planning and implementing. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to Dean, Student Welfare, Dr. Raman Tripathi, and other deans and faculty members from the Department of Chemistry, as well as those from other departments of this university. Thank you. I also extend my sincere thanks to the audience, especially my dear students, for their sincere efforts and participation. I extend my sincere thanks to the team led by Nishan Bihar and Amit Baghel, who made their efforts for grand success of the program by making necessary arrangements, technical arrangements, especially in this hall. I also extend my thanks to media cell, engineering cell, and administrative cell for their kind help. I thank to my sincere efforts and this from Cloud Effort to this current band, these students' lovely song for Ma Saraswati Puja. Thank you very much. Finally, I am thankful to those who helped directly or indirectly to make this event successful. Thank you all once again. Thank you. So now the program is, I think, over. Thanks to all from my side. Thank you. हाँ सर एक मिनट